Good morning, friends. How are you doing today? And I notice a little bit of lag. I do not know why it is there, but let me see if I can get a fix on this lag real quick. All right, friends. So, welcome to this live stream. And today we will start Akulmach Live by talking about the subjects on science. And today we want to discuss about something very interesting, something which is intriguing all of us. And it's about the elements. We know that there are periodic table. Periodic table is something that we study in our schools. We all know that, and we know that these colorful band describes the properties of similar elements. And painstakingly scientists have been able to put them all together, and that is why we call them periodic table. Now the whole point is that there are up to uranium, there are elements which are heavy elements. We know that these are all radioactive elements, and up to uranium is also very big in size, and we do not find anything which is beyond that uranium. In fact, there are other elements up to 118, because uranium is 92, up to 118. But those elements are temporary, they are not stable, and they disintegrate. Most of these elements have not been even named. Let me show you the periodic table again. So the thing that you see here in gray in the last, from 113 to 118, these are the elements which are not even named. And considering this, the heavier you go, it's the nature as we understand today that the elements are unstable. However, it has been hypothesized that there could be a possibility that there could be heavier elements also existing somewhere in the space, but so far we have not been able to find the heavier element, heavier than what we see in the periodic table, because anything beyond that is not stable. They disintegrate very quickly. They have a very short half-life, and by the way, half-life is something we call when the material completely decay, half of it within a limited time. So in a very short period of time, these heavy elements decay, and we are not able to find the existence, proof of existence of these heavy elements until now. So what is going on in this space? Before we discuss about the heavier elements, let's understand how the elements are produced in the first place. So essentially, when the universe was born, there was only hydrogen. However, quickly that hydrogen accumulated in the stars. They formed the first stars, the first generation stars, and then they burned very quickly, and because of the pressure in the center of the stars, the hydrogen starts making different element. That means if you look at the hydrogen, essentially hydrogen is nothing but a proton and an electron. So very simple, very basic, and there is a possibility, because of this extreme pressure, the hydrogen atoms will start fusing together to form heavier elements, and therefore these heavy elements then further fuse together to create more and more elements. So essentially the stars are the element producing factories. These are the factories where the heavier elements are fused depending on the size of the star. However, there is a limit to this, as we understand today, that the stars cannot generate whatever they do, whatever size they have, but they cannot generate bigger elements than iron, which is on the periodic table it is 60. That means 60 neutrons and 60 protons
atomic number of 120. The weight of the iron atom is about 120. So it is difficult because, as I have told you in the beginning, that if you combine two iron atoms, you get atomic number of beyond 118 on the periodic table, which is not stable as far as our understanding goes. So after the iron is formed in the core of the star, the element creation factory shuts down, and iron actually start consuming the energy of the star, because the further nuclear reaction cannot happen, and then the star explodes, basically dies in whatever form. Either it forms a black hole, or it forms a neutron star, or a white dwarf, depending on the size of the star. So as I'm showing here, that if the size is average star, then it will become red giant, and then it ends into a white dwarf. If it is a larger star, which are massive stars, then it will actually explode into a supernova when the iron is formed at the core. And then there are two possibilities. One is that it can form a neutron star, or it can straight away collapse into a black hole. So where is the possibility of finding elements like gold, lead, silver, uranium? Because when the stars are not able to form these elements, heavier than iron, then where these heavier elements are formed? And we also know that in the beginning of the universe there was only hydrogen. That means these heavier elements, heavier than iron, has either got created in some process, and or probably come from somewhere else. So this has been a mystery, and subsequently now we find that the heavier elements are formed in a fraction of a second during the large supernova, and also in bigger celestial body collisions like neutron stars. So when two neutron stars collide, there is a possibility of a new type of atomic reaction taking place, because the conditions are so wild, so fierce, that the heavier elements are formed, heavier than iron, things like gold, etc. And those processes are known as R process. And I will explain what is an R process. It is slightly different than a nuclear fusion reaction. It is a different kind of a nuclear reaction. So that is why the heavier elements, heavier than iron, are so rare, and that is why we also call them rare earth element, because they are also found, they are rare on earth also, and they are very expensive, because if you see, the gold is quite expensive, platinum is expensive, titanium is expensive, simply because there's not too much of it in the universe, and therefore it is not produced in a large quantity, unlike anything below iron and up to hydrogen. They are abundant, all these smaller elements are abundant everywhere. So in order to find these heavier elements, we have to look at other processes like collision of neutron stars. And as you know that neutron stars are quite heavy. They are only 20 miles across, but they may have a weight of 2.5 times the mass of sun. So there's a lot of mass compacted in a very small ball, and when two neutron stars collide, there is a lot of material to create all kinds of permutation combination at the nuclear level. And that is when these two stars, neutron stars, collide, the heavier elements are created. So let's move on. And when we started understanding the neutron star collisions, we actually started detecting the creation of heavier elements like gold, lead, silver, titanium, uranium, etc. And by the way, I must clarify here that plutonium is an element which is created in the nuclear reactor, which is a bomb, nuclear bomb grade substance. So plutonium is very radioactive. It degenerates. That is why it is used in the atom bombs. So let's move on. I mean, now we have established that the neutron stars are also capable of producing new elements, heavier elements, because the lighter elements are produced in the cores of the star.
So this neutron star uses a new type of or different type of fusion, which basically is described by scientists as our process. By the way, even today we do not understand a great deal about our process as the research is on. However, we know some bit of it based on our observation. And what it takes is basically some sort of process where the neutrons are rapidly absorbed by the iron nuclei. So when the iron nuclei absorbs the extra neutrons which are available, especially in the case of collision of neutron star, because neutron star, as the name suggests, is made of neutrons only. And then if there are iron atoms which are found on the surface, small bit of iron atoms on the surface of the neutron star, only in the form of nuclei, during the explosion the conditions are so fierce and so violent. When the neutron star collides, you can actually see these collisions so bright that they outshine the entire galaxy. So when the temperatures are so high, pressures are extreme, and there are little bit of iron atoms which are found on the surface of the neutron star, very few, because rest of the material is neutrons. These iron nuclei actually absorbs the extra nucleon because of the neutrons, because of the extreme conditions, extreme temperature, extreme pressure. And then something miraculous happens in the R process, that the neutron basically becomes a proton releasing the electron. And this is called beta decay, because if the neutrons are absorbed, then obviously it is not stable, and then immediately it decays by emitting a electron. And once the electron is emitted from this extra neutrons which have been absorbed by the iron nuclei, then obviously it becomes a heavier element. So this is a very rare kind of fusion reaction which could happen only in the hearts of the neutron stars. However, now the question is that recently scientists kind of also hypothesized that there could be more heavier elements, bigger elements than even uranium that could exist, because as per the study, the scientist says that even though bigger elements are not stable, they decay quickly. However, if the atomic periodic table number is around 260 or above, then it can form even heavier elements and stable elements. So far we have not been able to detect these heavy elements anywhere in our universe. Nevertheless, scientifically it is shown that this is possible. The heavier than 260 number on the periodic table can be stable, or at least can be fairly stable. We will have a decay, and therefore the search is on. And then as part of the search, scientists found that there are certain elements found floating in the stars which cannot explain the existence of silver, etc., forming within the star. So while doing that study, they hypothesized that these heavier elements could have been formed in the early stars. Well, now let's understand what are these early stars. When the universe was formed, there was only hydrogen, and quickly hydrogen accumulated and formed the early star, first generation stars. These stars were massive, they were very huge. 300 minimum, the smallest star could have been 300 times the mass of sun. Very, very big stars. They burn very quickly, they shine brightly, and they exploded in a massive explosion. So since we do not have any evidence, it is a hypothesis, because we are also searching for the existence or the creation of supermassive black holes, and it has been linked to these first generation stars. And now scientists are saying that these first generation stars could have been factories for making even heavier elements than iron, and in their cores, because they had so much pressure, so much energy, so much material, the iron could not
absorbs or stop the compression of the large star. So there was a possibility, there could be possibility that this R process could be running in the cores of star itself, and the neutrons can be absorbed by the iron core, and then it can form something which is very, very heavy and stable. Why scientists are saying that? Recently they've basically were studying about 40 stars in our own galaxy, and they found that there was a presence of or rather abundance of silver and other heavier elements, which could not be possible for the star to create, because as I told you, the star's element creation factory stops when the iron is formed. So there was no way a star could form heavier element like silver, etc. And therefore the scientists are suggesting that these large stars could have created the heavier elements which quickly decayed into silver, etc., which later was absorbed by the large stars. So the whole point is that even though we have the guiding principle of periodic table, and we know that the heavier elements heavier than uranium are very unstable, very radioactive. However, if your periodic number is 260, that means your elements are much heavier, much bigger, then it could create a proposition of building much stable heavy elements. Now, what is the characteristic of those elements? Like, for example, we know characteristic of uranium, we know characteristic of gold, silver, even iron, and every elements which are present in our periodic table. Well, the answer is simply we do not know, because first of all we have to basically detect these heavy elements in our universe somewhere, and if we are able to detect them heavier than uranium, stable elements, then we will be able to basically do more research and identify the characteristics of these heavy elements. But the point is that the heavy elements would have been created by the first generation stars, and because of that we find little bit extra abundant quantity of elements like silver and lead, etc., within our third generation star. And today the stars are third generation. That means the first generation stars created heavier elements, then the second generation stars also came and gone, and now we are in the third generation star systems all across the universe. So friends, this is something which I wanted to share in this science show today, December 26th. And I will catch you again with science tomorrow. Meanwhile, don't go anywhere. I will be coming back with business tips after a short break. So don't go anywhere. Just leaving you just for a very short break. Hello friends, welcome to the business section, and today we will talk about how can you leverage the holiday season and what are the activities that you can get involved in order to improve your business, improve your company. Now we know that
this is the last week of the year, and yesterday we celebrated Christmas, and we have very little business activity because there is going to be a lull in the market. There is not going to be much activity because festivals have come and gone. People have purchased whatever they wanted to purchase, like gifts and items that they wanted to purchase, or even go for recreation, etc. But right now we are getting into a low business segment. That means there is going to be slowdown in the market for a couple of weeks until third week of January, because people will have to come back, and then they have to wake up to the reality, restart their new year, and then they will start thinking about the spending. So what you do in this period, that is what we want to discuss today, how you can utilize this period to improve your organization. And especially the festival season is over, and we have also celebrated all our festivals. So let's look at what you can do. I think one of the things that you must do now is look internally, and you must look at how you can basically motivate your employee. You can utilize this time to motivate your employees so that they are much more energized and potent force, and you can utilize this slow period of next 1 month or 3 weeks or up to 1 month to basically motivate your team, and say that if any grievances are there, settle that. So what are the 5 things you can do in order to appreciate your employees? Something that we want to discuss today. Number 1 is a thank you. A handwritten thank you note will be highly appreciated by the deserving employees. So as a tip, this is a time when you must start thanking your employees. And even if you just purchase the card from the market, that will have a lesser effect. But if you do a handwritten, a personal note for the employees, it will take you a long way. And a simple thank you is highly appreciated by humans, and employees are obviously humans. They are part of your team, and they will actually feel very very high about when you are able to give them a handwritten thank you note, because it look like you have taken time out in your own busy schedule, and you have written thanking all employees, the handwritten thank you note to all the employees, all deserving employees, of course. So that is one thing that you must do. Utilize these slow down 3 weeks of time until third week of January to basically start creating these thank you notes for your employees. So when you return to office after first week, you should be ready to give these thank you notes to all your employees, which are personalized, handwritten. What are the other things that you can do? You could also plan and celebrate the lunch parties, or some sort of dinner, some sort of outing for the entire team. Now, why this is important? You see, past 2 months, your company has been working full time in the overdrive to basically fulfill the increased requirement during the festival season. So your employees have worked very hard. They have generated revenue for your organizations, and therefore, taking them out for a lunch or a dinner, it's not going to be a big deal for you, because the employees have already contributed a lot to the growth of the company. When there was opportunity for business, there is an opportunity for business, they contributed a lot by increasing the revenue for the organization. So now this is a slow down period. This can be utilized very effectively because there is no hurry, there is no deadline, there is nothing like that. So employees will be at peace also mentally. So this is the right time for taking a time out for a gala lunch or a dinner event, only specifically for your employees. You could also basically do any other team activity. You can actually go on camping trip. You can do whatever you want. Essentially, take the employees, take out funded activity all together,
and this is the right time because there is not going to be pressure of deadline or anything like that. Anyway, nothing is going to move in this market for next 2 to 3 weeks. So this is the right time, right opportunity for taking employees out for some sort of outing. What next we can do? You can also start some sort of a lucky draw, some sort of lucky draw for deserving employees. Or you could say that, okay, this is no lucky draw, I will give the gift coupons to everyone, to all my employees. So you could actually start giving, because once you give, then it creates a very good impression, because employees will start feeling that, look, we worked so hard, and and we are appreciated, and a bit of we are also getting gifts, and these are the gift vouchers, so I can redeem these vouchers based on what I feel. So instead of giving them a toaster or a coffee making machine, which some of the employees may not like, you just give them the gift voucher. They can actually redeem those vouchers in whatever they want to redeem, whatever gift they want to buy for themselves. So this is a time where you can start planning that activity, because the festival season is over. We are now getting into slowdown, and this is the right time to contribute from your side for your employees. What next we can do? We can also create some sort of sessions to appreciate all our employees publicly. Give them awards, and this is the right time to award the employees, because anyway, there is not going to be much rush for people, and therefore you can actually use this time to create some sort of seminars where you will announce the deserving top performing employees who actually contributed a lot. Now, awards could be a certificate, or it could be a cash prize. So you decide based on your market condition, but this is a time where you can start planning these things. Let's see if we have more business tips left for you to share. Yes, of course, you can also start flexible timings, because anyway nothing is going to happen in next 2 to 3 weeks. So during 2 to 3 weeks, or at least 4 weeks, next 4 weeks, you can actually go slow, you can chill, and you can say that, look, for month of January you will give flexible timings. Decide what rules you want to follow for giving the flexible time. It should not happen that you say that, okay, you come and go whenever you want, or work whenever you feel like. You can actually say that, look, this is the plan, you have to give me at least so many number of hours of attendance, but I give you flexibility because you worked very hard for my company. I give you flexibility that, look, now you can decide your schedule, and use this time for yourself, for your personal, depending on how you want to plan your day. So I don't want to fix that. For next 1 month there will be flexible timings. It could act as a gift for the employees, and it could be a good strategy for you to implement these flexible timings. You can also provide some deserving employees the vacation, a paid vacation. This is also very good, because you can send them to Hawaii or any recreation activity for all the employees who are deserving, like as an award. So this could also create some sort of competition between the employees, where they will start performing more and more during the festival period. And if you actually follow it up by giving deserving employees, top performing employees, some sort of expensive vacation in Langkawi or Mauritius or Hawaii, whichever location suits your budget and your location, you can actually start giving them these trips. You could also choose India and in Himalayas, give them a retreat, snowy retreat also. So options are immense. You can start giving that vacation time completely paid by the company to the top performing employees, and this is the right time to offer that, because employees will not have any pressure. They would actually go into those vacations absolutely free,
they will enjoy themselves with their family, and they will return completely energized. So you know that these are the top performing employees, and they will be much more loyal when they return from these vacations, because you have sent them on a completely paid vacation from your side. So let's see if we have more ideas remaining. Yes, of course, there are different methods by which you can create the more cohesive team, and one of the method is basically looking at creating more cohesive team. So there are so many team building camps which are available. You can actually send the entire company into a 3 weeks retreat, team building exercise, which is not work. These are all physical activities. You go into a jungle, you live in a camp, you work together, and you're not looking at any official targets. You are only spending time together, and so it's a good activity. And since nothing much is happening in the field, you can as well utilize this time to go for the camp, and it is going to be good for you also, because you will also get time out and you are not thinking about targets, business, revenue, taxation, etc. So I think this is the right time to go into some sort of a camp activity along with your entire company. So friends, I've shared 7 to 8 ideas with you what you can do in order to improve the employee morale, especially now, from now December 26th till 3rd week of January. There is going to be immense slowdown in the market. You can utilize this time, look internally, improve the morale and confidence of the employee. You can energize them, you can create more cohesive team, you can award them with cash prizes, or you can appreciate them by giving them trophies. Whatever is your idea, I've shared all these different ideas which you can utilize in the business tips section. So friends, if you have any question, let me see if there are questions coming in on this subject. All right, I don't see any question on this subject, but we are live across all social media. So if you have any questions, feel free to send across your questions. I will take a break now, and I will join you back in the next section. See you. Don't go anywhere. I will be back in few seconds. Welcome back, friends, and this is a section about the top companies. And if you're living in India, and if you're wondering which are the top companies in your state, and if you want to know, then you have reached the right program. In this program, we will actually do researched list of top companies in your state. And right now we are actually moving through the state of Haryana, and the top companies in the state of Haryana, we are researching and providing you the details about those companies. And today we will be discussing about the technology, hardware, and innovation, which are the top companies in the state of Haryana in the area of technology and hardware, which are number one. So considering that Haryana is not the one of the largest states of India, but it may have some companies which may have impact India wide, or even global companies are there. So
which is the topmost company in technology space in the state of Haryana. And the company is Uno Minda. Uno Minda is the largest technology company which is based in Haryana, and there are technology companies which are the sort of car manufacturer, which is also Maruti Udyog Limited. But then we have to look at the different segment, because Maruti Udyog Limited may be churning out more technology, but Uno Minda is a largest technology company primarily working for the automobile industry. So I will explain the difference here. But Minda is actually working on creating high-tech equipment which are used in automobile industries, and also these technologies can be replicated in other industries. And because of that, they are headquartered in Haryana. They are having India-wide impact. And let's understand the Uno Minda, why they are number one in technology space. Let us understand this more in detail. Well, Minda Industries Limited is an auto part manufacturing company headquartered in Gurugram, and their turnover is 7,000 crores. It's a major player in this segment. So 7,000 crores is a turnover of a technology company headquartered out of Haryana. So that is why, when there is so much big industry present in Gurugram, the one of the district of Haryana, you can imagine, the kind of impact this company may be having on the not only on the revenue for the state, but also employment and many of the CSR activity, because 7,000 crore of industry is not a small one. It's fairly large, and they are in the technology space. That means they are developing some high-tech equipment which are put in all your cars. So whether you're driving whichever car, some of the technology from Minda may be present in your car. So their impact is also not limited to Haryana, but their impact is felt all across India. So what are the items that these Minda is producing? Number one is the advanced automotive electronics. So what is happening today? A lot of the parameters in your car are fully automated, are microprocessor controlled, and the cars have the ability to also inform the manufacturer if something is going wrong. So all of these automation are being built into the cars, and so far we have seen high-tech instruments only in the foreign cars like BMW and Mercedes, where the microprocessor plays a major role. However, now the technology has been brought down to even the mid-segment cars, and a lot of these facilities which are typically present in the high-end cars are also now available in a small car segment. And all this is because of the local technology being developed by companies like Minda. They are doing a lot of research in this area. They are creating viable solution for the market. They are also ensuring that the local talent is used, and the equipment which are produced are for the Indian conditions, which is hot and humid. So these kind of things are being done by Minda, and their technology is basically used in automating the electronics in your car. And you know that the electronics are used quite a bit in your car today. There are a lot of sensors put across the length and breadth of your car, from door opening to even starting, cold starting, etc. And also, if the car is locked, you can get the car unlocked. You can actually remotely start your car, switch on the AC. All of those kind of things are now available in your car. There are apps. Some car manufacturers are giving the apps which will actually enable you all this, control your car from remote.
Then they are also giving the telematic and connected car solution. So each car will be connected to some sort of a network, and then the awareness of the car itself, the computer which is present on the car, will be talking to other either central server or to other cars. Now these are the emerging technologies. This is something which is like a future, and that will be very useful if this system comes up in a big way. Then in future we will start seeing self-driving cars, because when the cars have the ability to communicate with each other, they will also get the processing will also improve. The 5G network can be utilized to transmit information between the cars automatically, and then the onboard computer will be able to take a decision about what is to be done at that particular moment. And therefore you will not be able to not only provide the position of the car, you can also start creating much more complex systems where the car start communicating with each other and can locate the best route for your destination, and also get into the space of self-driving cars. So Minda is on the forefront of developing these technologies. These are the future, but being present in the state of Haryana will have a major impact on India's position globally. Also, the Minda will be working on these telematic and connected car solutions, which are very, very high tech. You can imagine, if you just learn about these things, they are very high tech. Now the other thing that the Minda is employed is basically creating the industrial automation systems. Now these are used currently by the car manufacturers, auto manufacturers, but these are industrial automation. That means they can be utilized by all other manufacturing industries to basically reduce burden of human resources on their production environment. Now the industrial automation are very effectively used even by the food and beverages industry. Now if you are a follower of this channel, especially this program about the top companies, I have covered a lot of F&B in the past, where there is a huge importance given to the automation. Some of these brands which are employed in manufacturing, whether they are cloth manufacturer or F&B manufacturers or supply chain, they actually use lot of these automation solutions. And if you look at Haldiram, which I have covered on this channel in the past, they used manpower only for uploading raw material into their system, and also at the end of the cycle of the production only for loading into their trucks for transportation. In the factory there's not even a single human used. Everything is produced. Whatever you see, all the snacks that you buy on the shelf of Haldiram is actually produced by robots, completely automated. So Minda is employed in developing these systems for generic solutions for all industries, and therefore this is really commendable activity that the Minda is doing, taking care of industrial automation for different companies, for different segments. At the same time, Minda is working towards making our environment eco-friendly. So all of these things that Minda is working on in the state of Haryana is basically making sure that the carbon footprint can be reduced and the production processes of different industries can be made much more efficient, thus by reducing the carbon emission by those industries. So all their solutions are focused towards eco-friendly. How do you basically ensure that the less waste is released in the environment, whether in water or land or in air, and if there are recycling possible, processing possible of the waste material, waste can be converted into something useful, or raw material for some other industry, well and good, so that there is no waste at all. So these are the technologies that the Minda is playing with right now. So you can imagine that Minda is really a high tech environment for you to work. So if you are looking at some sort of business association, Ono Minda is a very good company to engage with, because they are really high tech, really up above the curve
And if you want to start a career with Uno Minda, it offers a great career opportunity because they are a large industry based in Gurugram with a turnover of 7,000 crores. So being a high-tech player, the working conditions would be excellent, their remuneration would be excellent, and they would need people from all walks of life. Really, creme de la creme offers they may have. So both opportunities are open for you, and if you're in Haryana, hopefully this information will be quite useful for you and you can make up your mind. And I hope that I am able to inspire you to look at Uno Minda as some sort of business opportunity or a career opportunity. Let me see if there are any questions from the viewers in this regard. Well, I don't see any question on this. So friends, don't go anywhere. I will take a very short break, and we will return with a new segment. Don't go anywhere. It's a very short break.
Hello, welcome to Vaastu Remedies. And today I have taken a very interesting topic, and this is regarding our pets. Who doesn't want pets in their home? And after they land in our house, that becomes those pets become very much part of the family, and they become one of the family member. So definitely you can keep pets, and whenever you plan to have a pet in your house, just make sure that this is a lifetime commitment of a pet in your house. So don't even think of actually leaving them in life, because pets life living turtles, and they have a short span of life. So please make sure that you manage the pet very well. Now, what are those topics, or what are those remedies you should definitely take when you bring a pet in your home? And when we are bringing pet in your home, it is very very essential that you suppose if it is a dog, then you should keep the kennel facing towards north, because it is not only good for you, but it is also good for pets also. And they also the well-being is also associated in regards of direction for pet keeping. So there are many pets you can decide upon. There are fishes, there are turtles. Many people nowadays, they also keep, even in the olden days, they used to keep cows, and cows are really really very positive animal. And if you have that kind of resources, you can keep the cow, because the cow can have that ability, who can actually eliminates the sorrow in the family. So now going forward, we can also keep fishes. And when we are talking about fishes, because fishes also bring those lovely so that also the pet also actually brings fortune, prosperity, especially when we are talking about the fishes. So if you want to have fishes in your house, then it is good to keep their aquarium in north and east direction of the house, because that will definitely bring fortune, health and prosperity. As far as many people, they also keep rabbit. So we'll be discussing about the rabbit also, and you have to be very much sure that, because all these pets bring down the anxiety, and they also become happy companion. So when we are talking about the rabbit is also a good option, because rabbit is an animal which can bring kind of harmony and good fortune in the house. So this is again very lovely options. And make sure that all the injections because there are some very dreaded diseases which generally rabbit gets. So make sure that you visit to veterinary and find out what are those injections which are required for rabbit. And it is good, and always make sure that the place of rabbit should be always clean. So daily basis cleaning of rabbit house is very very essential. Now going forward we also can keep turtle. And generally nowadays, especially people do consider keeping turtle. And in turtle it is really really you have to make sure, because turtle is having a very big life span. So you have to make sure when you are bringing turtle, so it is kind of make sure that his all his life is taken care by you,
you or people who are your sons and daughters, because turtle is definitely auspicious, and that this animal can bring wealth, and you have to take care. The tank of turtle you should be keeping in the north side of the house, so that is also very very good to keeping. And as far as other animals are concerned, there is one animal, you can see the picture of a dog. Many people keep dogs and cats also, but there's one people who generally I've seen in lately, the Gen Z population, they like to keep frog also. And for many people, frog, they cannot relate frog as a pet, but if you're keeping frog, that will bring a good fortune also. It enhance togetherness in the family. So now one thing which is very very essential for pet keeping is what animal you should not keep as a pet. So first is that you should not keep a pigeon, because pigeon is one thing, one animal which is not considered very good in Vaastu. A part of this, that if you are keeping parrot, then also you should have lot of time, because parrot requires your time, and it also requires kind of interaction, because if you are interacting well and your parrot is happy, then Vastu says that things will be positive, will be fortune. And if you, for the sake of keeping birds, if you are keeping parrot, then and you are not talking, you're not taking care of parrot, and it's like a kind of animal just putting in a corner, then the negativity can enhance in the family. So when you are bringing parrot, make sure that you have lot of time to talk to this animal. So these are few points, and where you can decide upon the directions, the kind of animal you can keep according to Vastu Shastra. So I will be meeting again with the next topic. Until then, see you. Have a nice time ahead.
Hello, welcome to the history details today. And today is 26th of December, and today is an important day as far as people who are into plays, who are into films, who do live shows, standing comedy shows. So for this is a very, very important day, because today when we are talking about plays, and we instantly come across the idea which comes in our mind is Shakespeare. And when we are So welcome to the history section of today's shows, and today is 26th of December. And when we are talking about the history, and when we are talking about the plays, today we'll be talking about the plays and the films and the standing comedy shows. And instantly when we have these kind of ideas, we think of Shakespeare. And when we think of Shakespeare, we have great tragedies which is being written by Shakespeare. And that is why it is an important day, because today is the day where Shakespeare has actually installed the play for the first time, and that too not in the theater but in the palace of James, the King of England. So it is important incident. And when we are talking about the plays, it is I just want to tell you that the first play which is recorded in history is around 2000 BC with the passion plays, and which were actually being played in ancient Egypt. The stories of god or Osiris was always performed in the festival throughout the Egyptian civilization. And when we are talking about Shakespeare, everybody knows that Shakespeare has written some great plays, and basically they are tragedies. And one of the most popular tragedy play is Hamlet. But today I will be talking about King Lear, and that is where we will be discussing about the play, about the details, the final details of the play, as well as where the first time Shakespeare has got the opportunity to showcase his writing, and that too in the court of in the palace of England. So when we are talking about King Lear, and King Lear closely parallels the life of King James, who was the King of England at the time of Shakespeare when he wrote this tragedy play. And as far as expert is concerned, the expert says that this play is closely related to the life of King James. At the same time, few critics says that they are related to the Shakespeare himself, because he was also having two daughters whom he loved dearly. At the same time, King James were also having daughters, and one of his favorite daughter, and this is regarding those how he interacted, how he at one point in time began hating her, and later he realized that he has done something bad. Now when we are talking about King Lear play, as I already told you that these plays are first time today, that is 26th of December, were showcased in the palace in England, and rather before the king, and rather than in any theater. Earlier those days, the
Globe Theatre were popular in presenting the plays. So this is something which we will be just little bit I will be telling about this King James, and in the background the play speaks about the three daughters of King James, and Cordelia was the youngest and most favorite daughter of King James, as it is stated in the history. And one upon a time, then when King James asked who would like to help him, and he wanted to divide the kingdom among all his children, and he asked all the daughters who loves me the most, and two daughters, the elder daughters, Gondril and Regan, they said okay, they just flattered him and said we love you very much, but Cordelia actually remained silent. And when he saw that Cordelia is silent, he had different ideas. He thought maybe Cordelia is not she doesn't love me, and he became very angry, and at the same time he actually asked Cordelia to just marry, and without her consent, he actually got her married with the king of France. And later on he realized his mistake, and then he was so much in pain when he realized that Cordelia was the one child of his who was very much in love, but by mistake he has actually asked her to go away from the England, and the sweetest daughter of King James were actually were not in this palace. And later on he left all his kingdom and he was wandering in England, and at the same time he also met one person who was exactly in the same way he was suffering, that his name was Edmund. And when Edmund and King Lear met, and they realized that both stories are same, and at the same time they wanted to contact King Lear wanted to contact Cordelia, but later on she was captured, and later on her husband was also captured, and they were executed in the prison. And this is finally the King Lear finally dies out of grief at Cordelia's passing. So this is a whole drama of Shakespeare. And today, because today is an important day, and today this for the first time this King Lear play was showcased, as I told you, in the palace of King of England. So this is an important day, especially for those people who are into plays, who are into theaters. So they should be celebrating, and they should, in fact, if you have time, you can read this tragedy. This is the first tragedy which was showcased. So this is what I want to share with you, all of you, regarding the important date, which is 26th of December, and about the King Lear, which is one of the finer tragedies written by Shakespeare.
So good morning. How are you doing today? Today I am here with my tarot reading cards and tarot reading session, and I'm just waiting for your questions. And I can see there are many entries where already people have joined the random competition. So let's begin our reading. This is one card reading, and let's begin. We have Tanya Khajuria, Neeru, Bhavani Shankar, Lipika Das, Akhilesh Kumar, Miss Yadav. So welcome you all. Let's begin the reading. तानिया खजूरिया, कार्ड नंबर 2, आज का एग्जाम पास होगा। कार्ड नंबर 2, आज तो चैलेंज दिख रहा है तानिया जी, ऐसा क्यों है? या बैड एनर्जी कार्ड है? सो प्लीज ध्यान से अपना एग्जाम दीजिएगा आज। और नीरू, आज की फीलिंग कार्ड नंबर 2, आज की फीलिंग कार्ड नंबर 2। देखिए आज की फीलिंग कार्ड नंबर 2 के अनुसार थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हैं जो शायद उनको बुरी लग रही है, अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं। तो नीरू जी, उतना ज़्यादा 100 पॉजिटिविटी नहीं है, सो यू हैव टू बेयर विद दैट। नीरू ने पूछा है दोबारा से, कार्ड नंबर 2, कल मेरा एग्जाम है मैम, क्या क्लियर कर पाऊंगी? कार्ड नंबर 2, बिल्कुल आप कर पाएंगी। आपके लिए ये एडवाइस दी जा रही है कि जो आपने पहले, क्योंकि एग्जाम में जो हमने पढ़ा होता है वो उसको हमें दोबारा याद करना पड़ता है, तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से याद कीजिए और थोड़ा अपना ध्यान उसमें लगाइए। यस कार्ड है, लेकिन थोड़ा सा ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। थोड़ी चीज़ें हो सकता है, कुछ चीज़ें आपकी रह गई हो, उनको दोबारा से पढ़ लीजिए, दैट विल हेल्प यू। देन आर्यन की फीलिंग कार्ड नंबर 1, आर्यन की फीलिंग पॉजिटिव है। तानिया खजूरिया, लेकिन आपके रिजल्ट में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है जो सक्सेस के लिए, तो बस आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। भवानी शंकर, स्मृति नायक मुझे न्यू ईयर विश करेगी, कांटेक्ट नहीं है। नहीं, वो नहीं करेगी, हार्ट ब्रेक का इंडिकेशन है भवानी शंकर जी। लिपिका दास, जनरल रीडिंग कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 1 लिपिका, जनरल रीडिंग आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आज आपके लिए रिलेशन में रोमांस का इंडिकेशन है, करियर में सक्सेस का इंडिकेशन है, और जनरली भी एक बहुत ही अच्छा एंड कोजी एंड बहुत ही लवली इंडिकेशन है, बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। ऑल द बेस्ट लिपिका दास। फिर दूसरा है कि सैन की फीलिंग कार्ड नंबर 1, सैन की फीलिंग भी आपके लिए पॉजिटिव है, और देखिए ऑलरेडी रोमांस इज इन द एयर दिख रहा है आपके लिए। सो लिपिका, आज बहुत ही अच्छा दिन है, अबेंडेंट, सक्सेस, अचीवमेंट, सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है। एंड देन मिस यादव, जनरल रीडिंग कार्ड नंबर 1, जनरल रीडिंग आपके लिए मॉनेटरी गेन्स लेकर ज़्यादा आ रही है, तो मॉनेटरी गेन्स होगा, और ये यस कार्ड है, पॉजिटिव इंडिकेशन है। My lecturer result comes soon. What's the possibility? अखिलेश कुमार सिंह, तो ये करियर का सवाल है, तो आप चाहें तो आप करियर गाइडेंस ले सकते हैं अखिलेश जी, और आपने कार्ड भी कोई नहीं चुना है, सो प्लीज सेलेक्ट द कार्ड बिफोर द रीडिंग। बट आइडियल ये होगा कि आप सुपर चैट यूज़ कीजिए या आप मेंबर बन जाइए, दैट विल हेल्प यू यहाँ पर अखिलेश कुमार जी। टीम, इज देयर एनी क्विज? यस डेफिनेटली, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर आपके राइट साइड में लिखा है, तो आप देख सकते हैं। आपको करना क्या है कि हाँ, सो आपको एक्सक्लेमेशन साइन और ज्वाइन, ये दोनों टाइप कर आपको इस जो रैंडम ड्रॉ है, मतलब क्विज का नहीं है बट रैंडम ड्रॉ है, और अब ड्रॉ में आप शामिल हो जाइए टीम। सो आप और फिर आपका ड्रॉ निकलेगा, और उसके बाद फिर जो भी लकी वन होगा उस पर
तो क्विज है वो जो क्विज भी है वो 12:45 पर है, अगर आप एक डेडिकेटेड क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, अदरवाइज ड्रॉ तो है ही ऑलरेडी. एंड रेणु कार्ड नंबर 3, परशुराम की फीलिंग पॉजिटिव है हो सकती है, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं रेणु. तो पहले आपका फोकस प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस पे होना चाहिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी. देन ज्योति कुमारी का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे. और जैनब जबीन अली की करंट फीलिंग कार्ड नंबर 3 पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है. बहुत मेहनत मांगता है ये आपका रिलेशनशिप. अगर मेहनत करेंगी, डेडिकेटेड रहेंगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी. अली हैज ए फीलिंग फॉर मी कार्ड नंबर 3. फीलिंग्स तो हैं, लेकिन फिर वही बात है, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप करिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी. जैनब जबीन अली मेरा स्टेटस देखते हैं, मतलब तो यस है, पॉजिटिव है, न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है. थोड़ा सा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल गोल्स बनाइए, दैट विल हेल्प. देन जैनब जबीन अली मुझे लव कन्फेस क्यों करेंगे, तो इसके लिए प्लीज लव रीडिंग लीजिए थ्रू सुपर चैट. एंड रेनू बोल रही हैं थैंक यू. यू आर वेलकम रेनू, गॉड ब्लेस. सो मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेडिकेटेड जो क्विज है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 12:45 पर माइंड जिम है, आप उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पे रैंडम ड्रॉ निकलेगा. 6 एंट्रीज ऑलरेडी आ चुकी हैं हमारे पास. तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस ड्रॉ में, ये सिस्टम जनरेटेड ड्रॉ है, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए. उसके लिए आपको एक्सक्लेमेशन साइन और जॉइन टाइप करना है और दैट्स इट. आप एंटर कीजिए एंड यू आर इन दिस रैंडम ड्रॉ. इसके अलावा और जो भी विनर होगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो उसको फ्री एंजल्स रीडिंग दी जाएगी. और इसके अलावा अगर आप जानते हैं कि अब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है इस स्ट्रीमिंग में. शुरू होती है सुबह 10 बजे और एंड होती है अराउंड 1:15 अराउंड दैट टाइम. और सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. वी हैव साइंस शो, बिजनेस टिप्स, टॉप कंपनीज की डिटेल्स. तो अगर आप बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं तो बिजनेस टिप्स है. अगर आप टॉप कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं तो आपके स्टेट में उन कंपनीज के नाम और उनकी डिटेल्स आपको दी जा रही है. अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अपने घर में कुछ डायरेक्शन चेंज करके आप प्रॉस्पेरिटीज ले सकते हैं. प्रॉस्पेरिटी और वास्तु का रेमेडीज आप दे सकते हैं. इसके अलावा हिस्ट्री है और टैरो रीडिंग तो है ही. आप आगे बढ़ते हैं और जैनब जबीन जनरल रीडिंग कार्ड नंबर 3. जनरल रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. आपको लाइज का सामना करना पड़ सकता है, तो एकदम फेस वैल्यू पे कोई चीज़ ना लें. जैनब जबीन, इट्स अ नो कार्ड. एंड देन we have, and I also want to tell you that on Saturdays, coming Saturday, which is which would be last Saturdays, तो आपको अगर जो it will be member reading, so जो member हैं उनके लिए 2024 की reading हम करेंगे. and for that you have to become member first, and फिर आप एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. और द सैटरडे शो विल बी, स्पेशली टैरो विल बी डेडिकेटेड टू ओनली मेंबर्स.
तो वो कई सारे सवाल आप पूछ सकते हैं और डिफरेंट डेक से, और इवन एंजल्स डेक, ओरेकल रीडिंग, ये सारी अपने मेंबर्स के लिए ही की जाएंगी। और इसके अलावा 2024 के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं, सो फॉर दैट ऑल्सो you will get the reading, and that is, as I told you, absolutely free for all the members. So this is it. और हम आगे बढ़ते हैं। Okay, then we have चुकुन कुमार जी, जिन्होंने सुपर चैट यूज किया है, सो उसके लिए आई विल बी टेकिंग अप लव डेक एंड आई विल बी बाईपासिंग द क्यू फॉर चुकुन कुमार जी। तो हाउ आर यू चुकुन कुमार जी? एंड रानी भाभी की करंट फीलिंग, ये प्रश्न है आपका चुकुन कुमार जी। लेट्स फाइंड आउट। एंड लेट मी टेक, तो आज का प्रश्न है रानी भाभी की करंट फीलिंग। सो लेट मी टेक 1 कार्ड, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड्स। तो चुकुन कुमार जी, कल जो हमने रीडिंग की थी, आपने उस पर कुछ विचार किया। इट वॉज अ लवली इंडिकेशन फॉर योर रिलेशनशिप। अब आज हम देखते हैं क्या इंडिकेशंस हैं। तो आज चीज़ें, देखिए, फर्स्ट इज पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं और हम इसका जो आइडिया हम जो आपको देना चाहते हैं वो ये है कि सबसे पहली बात है कि आपके रिलेशनशिप में फीलिंग्स के बाद रानी भाभी की क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन जो मेजर जो गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है वो ये है कि आपको थोड़ा समझदारी से चीज़ों को, थोड़ा ज़्यादा जो प्रैक्टिकली चीज़ों को आपको हैंडल करना चाहिए। दैट विल रियली हेल्प यू। दूसरी बात ये भी बताया जा रही है कि थोड़ा सा अगर आप अपने इंट्यूशंस को सुनेंगे, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। सो ये ज़रूरी है कि थोड़ा समझदारी से थोड़ा हैंडल कीजिए चीज़ें। टेम्परेंस एक बहुत ही लवली इंडिकेशन है और ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, तो इसमें ऐसी कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया। जहाँ तक ये जो कार्ड है ये आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, ये भी आपके लिए पॉजिटिविटी का इंडिकेशन है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि थोड़ा इमेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल मत कीजिए। आप जहाँ तक फीलिंग्स की बात है तो ये डेफिनेटली यस कार्ड है। तीनों फीलिंग्स में ऐसी कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी बैड एनर्जीज आज तो नहीं दिख रही है रानी भाभी को लेकर। तो करंट फीलिंग एक मॉडरेट है, हार्मनी रिलेशंस में बनी हुई है। आप एक बहुत बड़े एडमायर है रानी भाभी के, ये भी आपको आपके लिए दिख रहा है। और आप इस रिलेशन को बिल्कुल सेंसिटिविटी, जेंटलनेस के साथ है, इमोशनल है, बट साथ में कभी कभी इमेच्योरिटी का दामन आप थाम लेते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा से प्रैक्टिकल हो जाएं। और ये कार्ड आपको ये बताता है कि थोड़ा सा आप विजडम का डेफिनेटली यूज़ कीजिए। यहाँ पर आपके लिए ये जो थर्ड कार्ड है वो आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आपको ना केवल अपनी मटेरियलिस्टिक जो आपके प्रोग्रेस है उस पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका अपलिफ्टमेंट, आपके मटेरियलिस्टिक अपलिफ्टमेंट के साथ साथ आपका इमोशनल अपलिफ्टमेंट भी होता चला जाए। ये तीनों कार्ड डेफिनेटली पॉजिटिविटी का है, ये सक्सेस अचीवमेंट का कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें सिर्फ निकल कर आती हैं चुकुन कुमार जी, कि पहली बात है कि डेफिनेटली इमोशनल हैं चीज़ें, यस है आपके लिए जहाँ तक रानी भाभी के, लेकिन आपको थोड़ा सा विजडम और थोड़ा सा समझदारी, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ अब आपको काम करना चाहिए रिलेशनशिप को लेकर। आज का यही प्रेडिक्शन है आपके लिए। यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है आपके लिए चुकुन कुमार जी, और ये कार्ड बताता है कि आपको सक्सेस मिल सकती है, बशर्ते आप
थोड़ा इमेच्योरिटी ना दिखा के थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएं और थोड़ा सा विजडम के साथ और अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप मेडिटेशन अपने लिए, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपने लिए घर का पूरे दिन में अगर आधा घंटा भी निकालते हैं और जो आपको आइडियाज़ आते हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये जो सक्सेस है जो आगे फ्यूचर में दिख रही है वो आपको होकर रहेगी। ये कार्ड है सक्सेस, अचीवमेंट का, आपके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट का और एक अच्छा जॉय हैप्पी मोमेंट का। सो थिंग्स आर ओके, ओनली फ्यू थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड चिकन कुमार जी टू परस्यू दिस रिलेशन फॉर फर्दर। सो ऑल द बेस्ट। Things are okay, things are positive at the moment. Now coming back to my, thanks for using super chat Chikan Kumar ji, and all the best. May God bless you, and may you achieve what you are looking, what you are seeking in this relationship. Now coming back to my one card reading, then we have Rupali Fulke, Rajesh इसलकर की करंट फीलिंग, कार्ड नंबर 1 बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही लवली है, विश फुलफिलमेंट का इंडिकेशन है आपके लिए रूपाली जी। आज आप बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं, बहुत कुछ आप पा सकती हैं, बस सो दैट विल हेल्प यू। आप ये यस कार्ड है आपके लिए, ऑल द बेस्ट। अब हमारे पास है निशिता जकाती जो कि हमारी मेंबर हैं, तो फिर मुझे बाईपास करनी होगी क्यों। और निशिता जी पूछ रही हैं कि दानिश की करंट फीलिंग मेरे लिए क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा टुवर्ड्स मी, क्या वो मेरे पास वापस आएंगे, मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी 2024 में। तो निशिता जी आप 2020 अभी भी तो मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी डेफिनेटली, क्योंकि आप हमारी मेंबर है, लेकिन आपको मैं ये भी बताऊंगी, आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप हमारी मेंबर हैं। सैटरडे को मेंबर्स ओनली रीडिंग है, तो आप मिस मत कीजिएगा। आप वहाँ आकर बहुत सारे सवाल अपने रिलेशन के, अपने करियर के आप पूछ सकती हैं। तो आप डू नॉट मिस द सैटरडे चंक फॉर योर रीडिंग रिगार्डिंग 2024। अब हम बात करते हैं दानिश की करंट फीलिंग मेरे लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो पहला है आपके लिए ये जो है इंडिकेशन है कि जो फीलिंग्स हैं वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिविटी का इंडिकेशन है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर आपको आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जब तक आप परसुएट नहीं करेंगी रिलेशन को और उसमें प्रॉपरली इसमें हैंडल नहीं करेंगी रिलेशन को, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप एक्शन लेंगी, एडवाइस लेंगी। और यहाँ पे सबकॉन्शियसली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नेगेटिविटी दिखाती हैं। तो जहाँ तक दानिश की फीलिंग है तो उनकी तरफ से भी चीज़ें शेयर नहीं हो रही हैं। तो ये जो है ना मिस्ट्री के होगा नहीं होगा, फीलिंग क्या है, क्या एक्शन लेंगे, तो ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी चीज़ों के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों में क्लैरिटी लाइए, चीज़ों के अंदर बैलेंस लाइए। डबल चीज़ें अगर सोचती रहेंगी, दो तरीके से सोचेंगी, तो फिर चीज़ें ज़्यादा आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। तो एक कॉल आपको लेना चाहिए चीज़ों को हैंडल करने के लिए, और ये क्रिएटिविटी और बैलेंस दोनों की ज़रूरत है आपके, और तभी वो एक्शन जो पूछ रही है वो निकल कर आपके लिए आएगा। तो ये कार्ड आपका फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। दूसरा, और एक्शन क्या लेंगे, क्योंकि मिस्ट्री बनी हुई है, सबकॉन्शियस में कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, और चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, तो एक्शन की बात तो अभी आती नहीं है। फीलिंग्स के में भी मिस्ट्री बनी हुई है, क्या करना है, और इसमें क्लैरिटी डेफिनेटली आपको ज़रूरत है। दूसरी बात, क्या वो मेरे पास वापस आएंगे, ये दूसरा प्रश्न है आपका।
सो दूसरा प्रश्न है, और मैं दूसरा प्रश्न लेती हूँ कि वापस आएंगे, तो यहाँ पर नो कार्ड है आपके लिए निशिता जी। बिल्कुल वापस आने का कोई इंडिकेशन आज तो नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर अगर वो वापस आएंगे भी या अगर आप आगे बढ़ेंगे भी, तो भी आपके लिए इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हैं, इतनी ज़्यादा आपको लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो आपको ये भी सोचना होगा कि कहीं आप इन सारे सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं दानिश के साथ रहने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है आपके लिए निशिता जी। तो इसको बड़े सोच विचार कर ही आप आगे बढ़िए, क्योंकि पहली बात है ये नो कार्ड है, और अगर आगे बढ़ते भी हैं तो ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है कि भाई आपका सब कुछ जैसा आप चाहती हैं वो ही आपको मिल जाएगा। आपको हैप्पीनेस जिस तरह की सोच रही हैं वो आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर ये आपको एक्चुअली एडवाइस देता है कि आपको सोचना चाहिए। डैट मीन्स हायर लर्निंग की आपको ज़रूरत ज़्यादा है। और आप अब अगर नहीं कर पा रही हैं तो भगवान से पूछिए, भगवान से का आसरा लीजिए। सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली अगर आप प्लान कर रही हैं तो करिए, आगे चलिए। अब आपकी मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी 2024 में, उसके लिए एक कार्ड मैं निकालती हूँ। देखिए आपके जो 3 कार्ड्स मैं निकाल देती हूँ और ये डेक मैं थोड़ा रख देती हूँ। तो आपके 2024 के बारे में मैं आपको बताती हूँ। 2024 आपके लिए करियर वाइज तो डेफिनेटली ये अच्छा इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है, मनी वाइज, मटेरियलिस्टिक वाइज, लेकिन डिले तो है चीज़ों में। अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के अंदर उतना ज़्यादा जिसे बोलते हैं पॉजिटिविटी जो आप देख रही हैं, जिस तरह की पॉजिटिविटी देख रही हैं वो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये आपको बताया जा रहा है कन्फ्यूजन बहुत है। और जहाँ तक दानिश की है तो एक तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं निशिता जी, दूसरी वो इतने ज़्यादा बिजी हैं कि जनवरी में तो बहुत ही ज़्यादा लगता है नया साल है, बिजी रहने वाले होंगे और इसीलिए बैलेंस अभी करने में लगे हुए हैं, जगलरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने में वो लगे हुए हैं। तो अभी तो ऐसा कोई इंडिकेशन 100% पॉजिटिविटी आपके लिए नहीं दिख रही है। तो ये एक डीप रीडिंग है आपके लिए। इसमें अगर आप थोड़ा विचार करके कोई एक्शन लेंगी तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा निशिता जी। सो थैंक्स फॉर आस्किंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग आवर मेंबर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेल। और फिर भी याद दिला देती हूँ निशिता जकाती, डोंट फॉरगेट टू जॉइन ऑन सैटरडे and tarot session where I will be doing dedicated reading for 2024 for all our members. और अभी 6 एंट्रीज आ चुकी हैं हमारे पास रैंडम ड्रॉ में, और अब मैं 1 कार्ड रीडिंग की तरफ जाती हूँ। वी हैव साक्षी सिंह, हस्बैंड सौरभ की फीलिंग, कार्ड नंबर 2 बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। आज लगता है बहुत क्योस दिख रहा है, बहुत डिफरेंसेस दिख रहे हैं। तो आज कोई भी नया डिसीजन मत लीजिएगा हस्बैंड सौरभ के लिए या उनके साथ। So look into that. It's a no card. Sakshi Singh. Rupali is saying thank you. You are welcome. साक्षी का मैंने अभी पढ़ दिया है। So this is it. और जैसा कि मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि 3 चीज़ें बताती हूँ। पहले तो आप एंट्री कीजिए रैंडम ड्रॉ में, आपको लिखना है एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन टाइप करना है और एंटर करना है। उसके बाद आप ये रैंडम ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, आपका नाम। और ये सिस्टम जनरेटेड ड्रॉ है, सो ये बाद में होगा। इसके अलावा हमारे पास क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट करते हैं 12:45 पर, विच इज़ अवे फ्रॉम टैरो। एंड द सेम टाइम सैटरडेज को हम रीडिंग करेंगे ओनली फॉर मेंबर्स। तो अगर आप डीप रीडिंग चाहते हैं और रिगार्डिंग 2024 तो आप मेंबर बन जाइए। और जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जॉइन ऑन सैटरडे इन फॉर ए डिटेल्ड रीडिंग।
which is only for members a day. एंड अभी हमारे बीच में है ज्योति कुमारी, अजय की करंट फीलिंग कार्ड नंबर 1। बहुत बहुत मेहनत चाहता है आपका ये रिलेशनशिप, छोड़िएगा नहीं रिलेशनशिप को। ऐसा नहीं कि कोई भी नेगेटिविटी आई, सक्सेस नहीं मिली तो आपने ठीक है मैं नहीं बात करती, ऐसा मत कीजिएगा। अगर रिलेशनशिप में लगी रहेंगी तो आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा ज्योति कुमारी जी। 2024 जनवरी मंथ रीडिंग। सो ज्योति कुमारी जी, मैं जैसे कि आपको बता रही थी 2024 की रीडिंग हम सैटरडेज को करेंगे और उसके लिए आपको मेंबर बनना पड़ेगा। तो जो भी मेंबर्स हैं उनको फ्री रीडिंग दी जाएगी यूजिंग ऑरिकल, एंजल्स, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस। आप कोई भी क्वेश्चन आप उस समय पूछ सकती हैं सैटरडेज को, बिकॉज दैट इज वी विल बी डूइंग प्रिडिक्शन for members only on Saturday regarding 2024। तो आप ज्योति जी आपने कहा है ओके, तो आप मेंबर बन जाइए जल्दी से चैनल के, ताकि आप अवेल कर सकें ये फैसिलिटी। ज्योति जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा जो शो है शुरू हो जाता है सुबह 10 बजे से, और डेट मीन्स स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग है। इसके अंदर जो करियर ढूंढ रहे हैं या बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उनके लिए बिजनेस टिप्स है, और टॉप कंपनीज ऑफ द स्टेट के बारे में डिटेल्स दी जा सकती है। इसके अलावा फॉर्चून, पॉजिटिविटी, मनी, इसके बारे में अगर वास्तु रेमेडीज चाहिए अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्रीज के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वास्तु का चंक। इसके अलावा साइंस एंड हिस्ट्री है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सेक्शन सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी हमारे बीच में 9 एंट्रीज हो चुकी हैं ड्रॉ की, 6 एंट्रीज हो चुकी हैं ड्रॉज की। और इस प्रोग्राम के बाद माइंड जिम जो क्विज शो हो रहेगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम रैंडम ड्रॉ निकालेंगे और जो भी विनर होगा उसका एंजल्स रीडिंग वर्थ ऑफ 1000 रुपीज़ एब्सोल्युटली फ्री रीडिंग आपके लिए की जाएगी। सो यू आर वेटिंग फॉर व्हाट? प्लीज़ जॉइन दिस रैंडम ड्रॉ नाउ। और आपको करना क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन ये टाइप करना है और एंटर करके नाउ यू आर in this draw, and so if you are lucky then you will be getting 1000 worth of angels reading absolutely free.
तो अब हमारे बीच में है पूनम बेहरा। क्या एस मेरे से बहुत अपसेट हैं? और पूनम, आपने कोई कार्ड नहीं चुना है, प्लीज कार्ड तो चुनिए, तभी तो रीडिंग करूंगी मैं। पूनम, आप रैंडम ड्रॉ में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सिर्फ एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन ये आपको टाइप करना है एंड यू विल बी इन दिस लकी ड्रॉ, रैंडम ड्रॉ जो मशीन जनरेटेड है। तो इन द मीन टाइम आप लोग अपने प्रश्न रखिए। लेट मी डू द बर्थडे रीडिंग थ्रू ऑरिकल डेक। लेट्स फाइंड आउट। सो लेट्स फाइंड आउट कि ऑरिकल क्या बता रहे हैं बर्थडे गर्ल्स एंड बर्थडे बॉयज के लिए टुडे। सो लेट्स take up. Okay, so this is 1, this is 2, this is 3 cards. Let's find out what oracle is guiding regarding birthday people. So first of all, enjoy this day to the full and happy birthday to all of you. And okay, first of all, the trust. You should be trusting things, and the trust to Almighty, trust to yourself, and the kind of work which you are doing for yourself is good. That kind of confidence you should be having today. So and if you have that, then definitely believe in magic, because Almighty is working, angels are working for you, so there's no need to worry. And time has come that you should meet people, you should have networking, and in fact new year is around the corner. You should be actually traveling out and maybe getting some fresh air that will help you. So after celebration, have a party tonight, and then plan something for yourself, for your family, or for with your friends. That will really help you, because once you are traveling and visiting many places, then when you come back, then things will be more positive, and you time also will help you to heal in any case. If you have any kind of problem, any kind of negativity, any kind of unsuccess which you are facing, so that way you will be actually more positive. So 3 things which has come out for birthday girls and birthday boys. First of all, that time has come that you should believe, angels are working for you. Very positive indication by oracle. At the same time, travel is good for you, so please plan at 1 day or 2 day visit that you can also can plan. And then time has come that be positive always, and healing time has already begin. Almighty universe is helping you to get all the positivity, so cooperate and be happy all the time. So this is for birthday girls and birthday boys. I'm coming back to my 1 card reading now. Okay, so we have करमपाल। गुंदीप की फीलिंग कार्ड नंबर 2। गुंदीप की फीलिंग पॉजिटिव नहीं है, बहुत दुखी है गुंदीप, और इंटरेस्टेड भी नहीं है। इनफैक्ट किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, दिख रहा है थोड़े उदास हैं। तो अभी तो कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है फीलिंग्स को लेकर करमपाल जी। देन वी हैव
पूनम बेहरा जिन्होंने अब कार्ड चुना है, क्या मेरे से वो बहुत अपसेट है? एक्चुअली यस, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकती। मैजिशियन कार्ड है, डेट मीन्स जादू की जो छड़ी है जिससे आप खुशी, हैप्पीनेस, जॉय ला सकती हैं, वो डेफिनेटली आप इसके लिए कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी अगर आप कुछ एफर्ट करेंगी तो आपको डेफिनेटली सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। देन ज्योति शर्मा, ओम नमो शिवाय जी। सविता के लिए अमित की हिडन थॉट्स एंड फीलिंग कार्ड नंबर 1 बहुत पॉजिटिव है, लवली इंडिकेशन है, यस कार्ड है, यूनियन रियूनियन का इंडिकेशन ज्योति शर्मा जी दिया जा रहा है। लक्ष्मी चंद्रावत, शुभम चौहान से मेरी शादी होगी। और आपने लक्ष्मी जी, पहली बात है कि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, और आपने कोई भी कार्ड नहीं चुना तो रीडिंग कैसे करूंगी मैं आपकी? प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन एंड सेलेक्ट द कार्ड। देन हिमल जंग, क्या प्रथा के साथ मेरा रीयूनियन होगा? कार्ड नंबर 3, प्रार्थना के साथ ये डेफिनेटली होगा, यस कार्ड है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए आप। इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, इट्स ओन ड्यू टाइम, तो जल्दबाजी मत कीजिए, बी पॉजिटिव, और ये ध्यान रखिएगा कि ये यस कार्ड है आपके लिए, तो थोड़ा गो विद द फ्लो। आपने लक्ष्मी चंद्रावत दोबारा से 4 बार आपने प्रश्न रखा, लेकिन कोई भी कार्ड नहीं चुन रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ फटाफट आप ना प्लीज़ आप कार्ड तो चुन लीजिए ताकि मैं रीडिंग कर सकूँ, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए प्लीज़ आप। वैशाली, कार्ड नंबर 1, जनरल रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, और इसलिए ये बहुत ही लवली इंडिकेशन है, बहुत कुछ आपके लिए आगे होने वाला है, और जो कि पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। सो दिस इज रियली वेरी गुड, पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए, एंड ये आपका नया फेज विच इज पॉजिटिव, दैट इज अबाउट टू बिगिन। ऑल द बेस्ट वैशाली। Then we have Vaishali saying happy Christmas and happy New Year too. Vaishali, I just want to tell you that आप मेंबर्स बन जाइए, और 2024 की रीडिंग आप वैशाली ले सकती हैं कमिंग सैटरडे। सो यू कैन आस्क एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि मेंबर्स के लिए ये जो भी रीडिंग होगी सैटरडे को वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। So Vaishali, take advantage of this. Then we have Poonam is saying thank you, you are welcome. Karampal is saying thank you, you are welcome. शुभम की करंट फीलिंग कार्ड नंबर 3, करंट फीलिंग बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है आदिति, सो यू हैव टू बेयर विद दैट। और नेगेटिव इंडिकेशन है, कोई नया डिसीजन मत लीजिएगा रिलेशनशिप को लेकर, दिस इज व्हाट। देन वी हैव शुभम को गिल्ट है क्या? है, हो सकता है, पॉजिटिविटी है। किस बात के गिल्ट की बात कर रही हैं, थोड़ा स्पेसिफिकली बताएंगी तो, और अगर आप सुपर चैट करके ज़्यादा डीप रीडिंग लेना चाहें तो लीजिए। और ऐसा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी इंडिकेशन है कि जो भी नेगेटिविटी है वो सॉर्ट आउट हो सकती है आदिति शुभम के साथ। शुभम से रीयूनियन होगा, कार्ड नंबर 3, बिल्कुल होगा। देखिए यस कार्ड है, नया घर, नया मीटिंग, डेट, सेलिब्रेशन, ये सब कुछ आपके लिए दिख रहा है आदिति जी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ऑल द बेस्ट। Vaishali is saying thank you, you are welcome Vaishali, God bless. ओके, लक्ष्मी चंद्रावत ने फाइनली कार्ड चला है, कार्ड नंबर 1, शुभम चौहान से शादी कब तक होगी? देखिए शादी होगी, इसके बारे में रीडिंग कर देती हूँ, कब तक होगी इसके लिए तो आपको लव रीडिंग या
सुपर चैट यूज आपको करना होगा। सो कार्ड नंबर 1 है, देखिए आपके लिए मेहनत करना जरूरी है इस रिलेशन में। लक्ष्मी चंद्रावत, क्लैरिटी होनी जरूरी है, कमिटमेंट होना जरूरी है, जो शायद अभी मिसिंग है। कंफ्यूजन का स्टेट चल रहा है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए और चीज़ों को हैंडल कीजिए, तब जाकर होगी। कब तक के लिए और कैसे होगी, क्या करना चाहिए, क्या रेमेडीज है, इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, सुपर चैट यूज कीजिए। जनरल फॉर 5 डेज, कार्ड नंबर 3, जनरल फॉर 5 डेज आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन फोकस में थोड़ी कमी दिख रही है आदिति गुप्ता। जो चाहती बहुत कुछ है, बट जो भी चाहती हैं, जो भी गोल्स हैं, उनमें फोकस नहीं कर पा रही हैं। तो यस कार्ड है, फोकस करेंगी तो ज़्यादा अच्छी सक्सेस आपको मिल सकती है। ऑल द बेस्ट। ओके, तो आदिति बोल रही हैं कि शुभम के साथ शायद आपका झगड़ा हुआ है, सो डोंट यू वरी आदिति जी। अच्छा काम करेंगी, एंजल से मैनिफेस्टेशन की प्रेयर करेंगी कि आपका ये झगड़ा ख़त्म हो जाए। रीयूनियन तो डेफिनेटली पॉजिटिव आया ही है आपके लिए। शुभम को गिल्ट भी है, तो डेफिनेटली कुल मिला के चीज़ें नेगेटिव तो नहीं है। झगड़ा ठीक हो जाएगा, झगड़ा होता है फिर दोस्ती होती है। सो बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। तो अभी हमारे पास रैंडम ड्रॉ के लिए, जो कि एंजल्स रीडिंग का ड्रॉ है, तो उसके लिए 8 एंट्रीज आ गई हैं। तो और भी कोई ज्वाइन करना चाहें इस रैंडम ड्रॉ में, जो मशीन जनरेटेड ड्रॉ है, तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है, एक्सक्लेमेशन साइन एंड ज्वाइन को टाइप करना है और एंटर करना है। इसके बाद ही आप इस ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। ऑलरेडी आप देख रहे हैं 8 एंट्रीज आ चुकी हैं फ्रॉम, सो दिस इज इट। आदिति कह रही हैं थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस आदिति, ऑल द बेस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि सैटरडेज को ओनली मेंबर्स रीडिंग है, जो कि हम रीडिंग करेंगे 2024, और जो मेंबर्स हैं उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री रीडिंग है, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द डेक्स, एंजल्स रीडिंग, ऑरिकल, एनिमल ऑरिकल रीडिंग। सो प्लीज बिकम द मेंबर एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑप्शन, दिस ऑफर। अभी 1 सैटरडे ही रह गया है, सो please become member. I'm waiting for your questions if you have any. This is a 1 card reading, but we don't only have 1 card reading. We have super chat where you can have angels reading, where you can have oracle reading. You can also have for relationship love reading. You can also have animal spirit oracle reading, and that will all help you in your career, in your well-being, in your relationship. So all the best. Jyoti Sharma is saying thank you. You are welcome. Jyoti, God bless you. Aditi, my mom, current feeling, card number 3.
करंट फीलिंग तो बहुत अच्छी है ज्योति आज आपकी मम्मी की। आज आप कुछ भी मांग सकती हैं, जो भी मांगेंगी वो अच्छा ही रहेगा। सेलिब्रेशन, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब कुछ फीलिंग्स में बहुत बहुत अच्छा यस है आपके लिए, बिग यस है आपके लिए, बिग पॉजिटिविटी है। सो ऑल द बेस्ट आदिति गुप्ता। संध्या शर्मा, क्या शेरू मुझसे शादी करेगा? कार्ड नंबर 1। बिल्कुल करेगा। थोड़ी बहुत इनिशियली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कुछ ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो शायद आप जो आपने जिनके बारे में सोचा नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर आप प्रोएक्टिव होकर काम करें अपने रिलेशनशिप में, तो न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन दिया जा रहा है आपके लिए। पॉजिटिव वाइब है डेफिनेटली। सो वर्क, यही एडवाइस है, प्लीज़ वर्क फॉर दिस रिलेशनशिप। जो भी करना पड़े डू इट एंड आपको सक्सेस मिल सकती है इसमें डेफिनेटली। ये है रीडिंग संध्या शर्मा की। सो एक यस कार्ड है। और अगर किसी की हेल्प लें तो जो घर में लेडी है या आपकी फ्रेंड है वो शायद आपको इसमें हेल्प कर पाए। कार्ड नंबर करियर, विल इट बी गुड इन कमिंग डेज। करियर के बारे में आपको एक्चुअली करियर गाइडेंस लेनी चाहिए वैशाली थ्रू सुपर चैट। देखिए, आपके करियर की अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है एंटायरली अपॉन यू वैशाली जी। अगर आप किसी गोल को लेकर ऑनेस्ट हैं, कमिटेड हैं, शिद्दत से काम कर रही हैं, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। कैजुअल अप्रोच से वैशाली सक्सेस नहीं मिलेगी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के साथ इवैल्यूएट कीजिए, क्योंकि जितना करेंगी उतना ही पाएंगी। ये आपके लिए इंडिकेशन है। तो ज़्यादा करिए तो ज़्यादा पाएंगी, ये बताया जा रहा है आपके लिए वैशाली जी। एंड देन वी हैव Aditi has sent me beautiful hearts. Thank you, Aditi. All the best. Then we have Himal Jung, card number 1. 2024 कैसा होगा मेरे लिए? तो इसके लिए हिमल जंग मैं आपको बार बार और सभी को बता रही हूँ कि आप मेंबर बनिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री रीडिंग फॉर 2024 की जा रही है ऑन सैटरडे। तो आप मेंबर बन जाइए और सिर्फ ना रीडिंग, आप और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जहाँ पर आपके लिए डिटेल रीडिंग हम करेंगे। सो प्लीज़ हिमल जंग, 2024 की सारी बातें और आपसे मुलाकात ओनली ऑन सैटरडे। तो फटाफट और मुलाकात करनी है अगर आपको हमसे ऑन सैटरडे, तो मेंबर्स बनिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए डेडिकेटेड डे है फॉर टैरो रीडिंग रिगार्डिंग 2024। लिपिका Vishali is okay. Sandhya is saying thank you. You are welcome. Then Vacha, card number 2. Crush, भाविक, feeling for me. Approach करेंगे सामने से। ओके, पहली बात है बच्चा कि आपका एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, तो आपको मैं एडवाइस करती हूँ कि प्लीज़ लव रीडिंग लीजिए थ्रू सुपर चैट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपका नहीं पढ़ूंगी, आज मैं थोड़ा सा इनिशियल पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पर लव एंड केयर अगर आप देंगी अपने क्रश भाविक को, तभी आपको आपके लिए पॉजिटिविटी निकलेगी। तो ये यस कार्ड है, तो डेफिनेटली, लेकिन इसमें आपको भी थोड़ा एफर्ट होगा। अप्रोच सामने से करेगा ये ज़रूरी नहीं है, और तभी होगा जब आप भी सिंसियरली चीज़ों को हैंडल करेंगे विद लव एंड केयर। वैशाली इज सेइंग थैंक यू, यू आर वेलकम वैशाली। लिपिका दास, आपके लिए तो बहुत कुछ अच्छा आया है। जनरल रीडिंग की एक्चुअली आपको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं कर देती हूँ लिपिका जी। पॉजिटिव है, मॉनिटरी गेन्स है, अबेंडेंस है, लवली इंडिकेशन है, ऑल द बेस्ट, यस कार्ड है आपके लिए लिपिका जी। चैन की करंट फीलिंग ऑलरेडी मैंने शायद कर दिया है आपके लिए।
So this is it. Then Shivani Gupta, कार्ड नंबर 1, अक्षय की फीलिंग डेफिनेटली पॉजिटिव है, और लेकिन इस पॉजिटिविटी के लिए शिवानी गुप्ता आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस रिलेशन में सक्सेस और हार्मनी मैनेज करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी. तो मेहनत कीजिए. यस कार्ड है. इसको इसमें मेहनत में या आप में इसके डिवोशन में आपको कमी नहीं लानी चाहिए, ऐसा इंडिकेशन है. एंड कार्ड नंबर 1, Prathna is angry, but do she loves me? She loves you? Yes, she does. Himaljang, all the best. Shubhangi, card number 1. क्या मेरी फ्रेंड प्रभात सेकेंड मैरिज सलमा से करके उसके साथ रहते हैं? मतलब आपका प्रश्न क्या शुभांगी पूछ रही हैं. कार्ड नंबर 1, ओके. क्या मेरी फ्रेंड प्रभात सेकेंड मैरिज सलमा से करके उसके साथ रहते हैं? यस या नो? ओके. नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर. अगर है भी तो यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी भी नहीं दिख रही है, कोई रिलेशन में बहुत ज़्यादा क्योस दिख रहा है, फाइटिंग हो रही है, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत ही नेगेटिव है, बैड एनर्जी है. So this is it. Then Vacha is saying thank you, you are welcome, God bless. Chitra, will Siddharth get the job as a manager? Card number 3. No का indication है Chitra, you have to bear with that. So this is it. सो ओके. सो ये बैड एनर्जी है, थोड़ा सा आज नहीं दिख रहा है कुछ भी. और आपने कार्ड नंबर कि ही विल बी हैप्पी इन द जॉब ही नहीं मिलेगा तो हैप्पीनेस का नहीं है, लेकिन हैप्पी रहने के लिए खुद सिद्धार्थ को, सो सिद्धार्थ ही हैज़ टू टेक द एक्शन फॉर द हैप्पीनेस, एंड जॉब हैज़ नथिंग टू डू विद हिज हैप्पीनेस. So for that he has to be vocal. Chitra, he has to take action on the appropriate time. Waiting on anything, especially in this new job, will harm him, and that can convert into negativity. So ask him. Whatever new job he is working upon, just wait and do maybe a double kind of effort, then things may change, and the action is very much required in this new job, new situations. Chitra. Shubhangi is saying thank you very much, you are welcome. Chitra and Shubhangi just passing a message to you that please become a member so that you can have 2024 reading absolutely free. So we are doing 2024 reading and many more kind of reading on Saturday, coming Saturday. So please become member to avail this free and that free reading for all the members and take advantage. Chitra is saying thank you, you are welcome. Chitra. Shubhangi is also saying thank you, you are welcome. Shubhangi. Lipika Das is also saying thank you, you are welcome. Lipika. So in case if you want to use super chat, now it is the right time to use super chat and get a deep reading. We can not only do reading of one card reading, yes or no reading, but we can do deep reading for your love life, for your career, and
for and we'll be using and doing reading with the combination of different decks so that you can get the maximum output of the reading. Zanib Zabeen, Ali likes me, card number 3. Yes, he does actually, Zanib. But the thing is, kind of focus or kind of commitment, what is required in this relationship, it is a little bit missing. There is a positivity. I must tell you, Zanib Zabeen, yes, it's a yes card. But क्या होता है, ख्याले पुलाव भी बहुत सारे हैं अली के चीज़ों को लेकर, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा. थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में कमी है, थोड़ी सी कमिटमेंट में कमी है, बट हाँ पॉजिटिव है, ग्राउंड बन चुका है. अगर अली काम करेंगे तो और उसके लिए अगर आप भी पुश करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएंगी आपके लिए. सो दिस इज इट. ओके, चित्रा इज ओके. यस चित्रा, यू हैव डन इट. 9 एंट्रीज हो गई हैं, आपका नाम आ चुका है चित्रा जी. यू सेड हाउ टू पार्टिसिपेट इन द ड्रॉ, सो यू हैव डन इट ऑलरेडी. And Zanib Zabeen is saying, yes, you're right, ma'am. Yes, I am right, because tarot is actually telling you, giving you a very right prediction today, Zanib. So just work on this, persuade Ali, be positive, Zanib Zabeen, and be committed. Ask him to be committed and find out, bring clarity in the relationship, Zanib. If you are inclined, अगर आप चाहती हैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, तो डेफिनेटली आप दोनों को ही काम करना पड़ेगा. मोटिवेट कीजिए अली को, ज़ैनिब ज़बीन. प्रॉब्लम्स हटाइए रिलेशनशिप में, थिंग्स विल वर्क आउट, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी बन चुका है आपके लिए. पॉजिटिविटी दिख रही है रिलेशनशिप में, बस थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है. Okay, Zanib Zabeen, yes madam, thank you. And he said कि attraction है आपकी. Okay, तो attraction से तो सारी चीज़ें शुरू होती है ना Zanib Zabeen, है ना. अट्रैक्टेड हैं, फिर आगे डीप इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर सोलमेट्स बनेंगे, फिर हार्मनी एंड सक्सेस के लिए रिलेशनशिप में काम करेंगे. तो दिस इज इट. एक्चुअली ये पॉजिटिव है. एक्चुअली आपको इसको पॉजिटिविटी में लेना चाहिए. ज़ैनिब ज़बीन, ऑल द बेस्ट. नाउ शिल्पा ऑल्सो जॉइंड द रैंडम ड्रॉ, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. और ये आपको बता दूँ, ये जो ड्रॉ है ये मशीन जनरेटेड है. सो लकी वन विल बी गेटिंग free, absolutely free angels reading worth of 1,000 rupees. So please join now. ओके, सो नाउ शिल्पा ने ज्वाइन किया है, और वे भी शिल्पा के ज्वाइन करने से 12 एंट्रीज हो चुकी हैं. 12 एंट्रीज आर ऑलरेडी देयर इन द ड्रॉ. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. एंड प्रिया नायर, विल आई गेट न्यू जॉब सून, कार्ड नंबर 2.
बिल्कुल, यस डेफिनेटली प्रिया, वर्क टुवर्ड्स दिस, बैलेंस करके चीज़ों को हैंडल कीजिए। सक्सेस, पॉजिटिविटी, न्यू बिगनिंग, सारी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं। ऑल द बेस्ट, यस कार्ड है आपके लिए प्रिया नायर। शिल्पा, जनरल रीडिंग, जनरल रीडिंग शिल्पा, जनरल रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आप उनको कैसे हैंडल करेंगी ये आपके ऊपर, आपकी आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो आपके लिए फ्रेंड सर्कल बहुत लॉयल है, सक्सेस आपका वेट कर रही है, अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंज लेने का टाइम आपके लिए आ चुका है। तो प्लीज गेट बी चैलेंज्ड एंड अचीव समथिंग गुड शिल्पा। Is Ali is my soulmate, card number 3। एक्चुअली अभी तो नहीं कह सकते ये 100% के सोलमेट है, क्योंकि जैसा कि पहले ही हमने कार्ड में पढ़ा था, ज़ैनिब ज़बीन जो प्रिडिक्शन आई थी कि कमिटमेंट की कमी है, कमिटमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली एक जो सोलमेट बनने का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर काम आपको करना चाहिए। जो काम करेंगी तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये कार्ड है, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन ये 100% पॉजिटिविटी भी नहीं कह सकते हैं। इसके लिए आपको ये बताया जा रहा है कि जो रुख है कहीं भी जा सकता है, तो अगर रुख पॉजिटिव की तरफ करना है तो क्लैरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट के साथ काम कीजिए, आपके लिए सक्सेस मिल जाएगी आपको। दिस इज वॉट इज बीइंग इंडिकेटेड। ज़ैनिब ज़बीन। प्रिया नायर इज सेइंग थैंक यू, यू आर वेलकम प्रिया। Does my neighbors respect me? कार्ड नंबर 1। बिल्कुल ऐसा यस है, पहली बात है। दूसरी बात है कि आपको अपने नेबर्स के साथ जेनरोसिटी के साथ एक्चुअली हैंडल करना पड़ेगा। हार्ड एंड फास्ट रूल अगर आप लगाएंगी अपने नेबर्स पर तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप थोड़ा उनका सुनिए, थोड़ा अपना सुनाइए प्रिया नायर। जेनरोसिटी, चैरिटी बहुत ज़रूरी होती है नेबर्स में इंटरेक्शन इनिशियली करने के लिए, तो एटलीस्ट तो चैरिटी एंड जेनरोसिटी दोनों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। रेस्पेक्ट वो डेफिनेटली आपकी करते हैं और इस रेस्पेक्ट को आप बरकरार रखिए विद योर एटीट्यूड विच इज़ ऑफ जेनरोसिटी। सो ऑल द बेस्ट प्रिया नायर। विक्रम, कार्ड नंबर 1। मेघा की करेंट थॉट फॉर मी, कार्ड नंबर 1। मेघा के करेंट थॉट आपके लिए इमोशनल है विक्रम जी। सो टुडे इज अ गुड डे, यस कार्ड है, पॉजिटिव है, इंडिकेशन। फॉर मोर इनसाइट विक्रम जी प्लीज गो फॉर सुपर चैट, टेक अप लव रीडिंग। रीटा, कार्ड नंबर, दिसंबर के बचे दिन अच्छे जाएंगे। बिल्कुल अच्छे जाएंगे, यस कार्ड है आपके लिए, लेकिन आपको जितने भी अच्छे दिन, अच्छे और भी अच्छा करना चाहती हैं, रिवॉर्डिंग चाहती हैं, तो उसके लिए आपको अपनी बुद्धिमत्ता मतलब विजडम का इस्तेमाल करना होगा कोई भी एक्शन लेने से पहले, और ईश्वर की प्रार्थना करनी होगी, एंजल्स को खुश करना होगा। और इसके अलावा इंट्यूशंस, अपने जो दिल की आवाज़ है उसको कभी भी इग्नोर मत कीजिए रीटा जी।
तो एक बार फिर रिमाइंड करा देती हूँ, बिकम मेंबर टू गेट फ्री 2024 रीडिंग ऑन कमिंग सैटरडे। सो जो मेंबर हैं वो भी ज्वाइन करना ना भूलिए, एंड जो मेंबर नहीं है वो फटाफट मेंबर बन जाइए इस चैनल के। सो ऑल द बेस्ट, आई विल वेट फॉर यू ऑन सैटरडे। तो अभी 14 एंट्रीज आ चुकी हैं, तो इसके बाद इमीडिएट बाद जो क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग क्विज का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा उसकी इमीडिएट बाद आपके एंट्रीज का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो प्लीज डू नॉट गो एनीवेयर एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द क्विज। Shrija, my mom be nice to me when I go for holidays. Card number 2. Shrija, card number 2. Definitely very nice. In fact, there will be celebration, Shrija. So don't you worry about anything. No second thoughts, Shrija. Things are really lovely. There will be celebration. There will be event which is waiting for you, and if you want to enhance this happiness, then I think a good advice from a good people can also help you, Shirja. So this is it. Happy event, celebration, ceremony, that is what is waiting for you, Shirja. All the best. Okay, Shirsha has also joined this random draw. So all the best to all of you. Now we have 16 entries. And this is a lucky draw, which is machine generated. So let's hope for the best. And now Vikram, card number 1, मेघना के साथ reunion होगा. Card number 1, बिल्कुल होगा. ट्राई करते रहिए विक्रम जी। सेलिब्रेशन यस कार्ड है आपके लिए। सो सेलिब्रेशन एंड हैप्पी इवेंट इज वेटिंग विक्रम जी। मेघना को लेकर रियूनियन डेफिनेटली होगा, जल्दी होगा। किस टाइम होगा, कैसे होगा, उसमें क्या रेमेडीज, इन सब के लिए तो आपको सुपर चैट यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये कार्ड बहुत पॉजिटिविटी का इशारा आपके लिए कर रहा है रियूनियन को लेकर। ऑल द बेस्ट विक्रम जी। और आगे बढ़ते हैं। निकिता शिवलानी, जनरल लीडिंग, कार्ड नंबर 3। जनरल लीडिंग आज पता नहीं क्यों आपके लिए अच्छी नहीं आ रही है। किस चीज़ को लेकर उदास है निकिता शिवलानी? आज कुछ तो ऐसा पॉजिटिव नहीं है आपके दिल में, और शायद थोड़ा सा दुखी है। सो नो कार्ड है आपके लिए जनरल लीडिंग। तो नो कार्ड का मतलब ये है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा निकिता पॉजिटिविटी लाने के लिए, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशन है, बहुत दुखी है किसी चीज़ को लेकर आज। सो यू कैन शेयर इफ यू वांट निकिता शिवलानी।
तो अभी हमारी 16 एंट्रीज हो गई हैं. ये लकी ड्रॉ जो कि रैंडम मशीन जनरेटेड ड्रॉ होगा आफ्टर माइंड जिम क्विज. उसके बाद हम आपका लकी ड्रॉ निकालेंगे. सो प्लीज़ डू नॉट गो एनीवेयर. आप बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट रहें और इस लकी ड्रॉ में जो भी विनर होगा उसके लिए एंजल्स रीडिंग की जाएगी एब्सोल्युटली फ्री, विच इज़ वर्थ ऑफ 1000 रुपीज़. So Nikita is saying, true, madam. Thank you for the reading. You are welcome. God bless Nikita Shivlani. And as I was telling that if you want to participate in the quiz, please stay tuned. After that, there will be a lucky draw which will be announced. So don't go anywhere. Just be here in this streaming so that you can find out who is that lucky winner. And the lucky winner will be getting angels reading worth of 1000 rupees. So all the best to all of you. Now we have 16 entries in the draw, and this is a random draw, machine generated draw. All the best. जैनिब जबीन, जनरल रीडिंग फॉर माई ब्रदर, कार्ड नंबर 3. जैनिब, आपके ब्रदर को आप गाइड कीजिए कि थोड़ा सा अपने लिए स्किल डेवलपमेंट कर लें. जनरल रीडिंग यही है कि मेंटर गाइडेंस लीजिए, थोड़ा सा सीखिए चीज़ों को, नई नई चीज़ें उनको सीखनी चाहिए जो उनको आगे जाके हेल्प कर सकती हैं. तो स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी मच ऑन द कार्ड जैनिब जबीन. तो थोड़ा सीखिए, कहीं एडमिशन लीजिए और अपने आप को, अपने ऑरा को, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा अपलिफ्ट कीजिए. ये आप अपने ब्रदर को फारूक उनको ये ज़रूर बोलिएगा. सो दिस इज़ ए लर्निंग कार्ड फॉर योर ब्रदर जैनिब जबीन. ऑल द बेस्ट. तो अगर आपके कोई और प्रश्न है तो आप लिख भेजिए, क्योंकि अभी 16 मिनट्स हैं हमारे पास. इसके अलावा अगर आप सुपर चैट यूज़ करना चाहते हैं तो आप सुपर चैट यूज़ कर सकते हैं. और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं. आप आराम से पढ़िए और
I'm waiting for your questions. शोभना सदारिया, इनका प्रश्न है आज, क्या महेश मुझसे नाराज हैं? कार्ड नंबर 2, यस या नो? यस, बहुत ज़्यादा नाराज है, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ही नेगेटिव इंडिकेशन है। यहाँ तक है कि शायद वो छोड़ के जाना चाहते हैं चीज़ों को, ही इज़ अपना मुंह फेर के जाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप सीरियस हैं महेश को लेकर तो ज़रूर ऐसा कुछ कीजिए जहाँ पर आप चीज़ों को ज़्यादा पॉजिटिवली हैंडल कर पाएँ, क्योंकि ये डेफिनेटली बहुत ही बैड इंडिकेशन है जहाँ तक महेश की नाराज़गी की अगर बात करें तो। शोभना जी, Shobna is saying thank you. You are welcome, Shobna. Just be positive. Take care of yourself well. Things ये भी समय निकल जाएगा शोभना जी. Don't you worry. वैशाली, card now, will I get to meet my soulmate as a life partner? तो देखिए, दो चीज़ें इसमें वैशाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रही हैं और बहुत ही डीप दिख रही हैं। पहली बात है सोलमेट और दूसरी बात है लाइफ पार्टनर। सो कई बार लाइफ पार्टनर होते हैं वो सोलमेट नहीं होते, सोलमेट होते हैं वो लाइफ पार्टनर नहीं होते, और कई बार सोलमेट और लाइफ पार्टनर दोनों एक ही हो जाते हैं। तो इसके लिए वैशाली जी, मैं आपका कार्ड पढ़ देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको सिंसियरली एक डीप रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आपको सुपर चैट यूज़ करना चाहिए। तो you will meet your life partner, soulmate, तो यस डेफिनेटली, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना जैसे शिद्दत से आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रही हैं, कितना आपको यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी जो कमिटमेंट है इज़ विद सिंक विद द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये यस है, डेफिनेटली पॉजिटिव, आप मीट तो करेंगी। अब कितना आप सोलमेट से मीट करेंगी कि लाइफ पार्टनर, इसके लिए तो आपको डीप रीडिंग लेना पड़ेगा वैशाली जी। सो अभी तो हम यस करके चलते हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो डोंट यू वरी। विजय लक्ष्मी शर्मा, कार्ड नंबर, क्या देवाशीष वापस आएगा मेरी लाइफ में? कार्ड नंबर 2, बिल्कुल आएगा, लेकिन विजय लक्ष्मी शर्मा जी, सबसे पहली बात है यू हैव टू वर्क। इसमें शेष नहीं होना चाहिए आपका रिलेशन, और विजय लक्ष्मी आपके लिए ज़रूरी है कि प्लानिंग के साथ आप इस रिलेशन को हैंडल करें विद प्रैक्टिकलिटी, विद रियलिस्टिक गोल, और प्लानिंग करेंगी तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। तो उसका मतलब ये है कि आपको डेफिनेटली सीरियसली इस पे हैंडल कीजिए। ट्रैवल करना पड़े, मिलना जुलना पड़े तो वो भी कीजिए। विजय लक्ष्मी, ऑल द बेस्ट। सोमा रॉय, मेरे जो गोल्ड चेन खो गई है मिल जाएगी, तो कर देती हूँ, लेकिन आपको एक्चुअली इसमें ऑरिकल रीडिंग चाहिए। मिलेगी, येस एंड नो बताती हूँ, मिलेगी, डेफिनेटली मिल सकती है, थोड़ा एफर्ट कीजिए, मिलेगी चीजों के लिए। कैसे खो गई सोमा इतनी बड़ी चीज आपसे? विजय लक्ष्मी शर्मा इज सेइंग थैंक यू, यू आर वेलकम।
विजय लक्ष्मी, तो मैं सोमा रॉय से बोल रही थी, कैसे खो गई आपकी, टेक केयर कीजिए, गोल्ड का खोना अच्छी बात नहीं होती, सोमा रॉय। एंड सोमा इज सेइंग थैंक यू, यू आर वेलकम। शाइनी इज सेइंग जनरल लीडिंग, कार्ड नंबर 3, जनरल लीडिंग आपके लिए पॉजिटिव है और न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है, ऑल द बेस्ट। शोभना सदारिया, महेश को मैसेज करूं तो मुझे रिप्लाई देगा, कार्ड नंबर 3, बिल्कुल आपको करना चाहिए, आपके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है शोभना सदारिया, आपको करना चाहिए। लवर्स कार्ड है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, गुस्सा तो होता ही है, तो गुस्से को ईज करने का तरीका तो यही है कि मैसेज करें, बातचीत करें, चीज़ों को हैंडल करें शोभना जी। सो ऑल द बेस्ट। शाइनी ने ये जो हमारा लकी ड्रॉ है, रैंडम ड्रॉ, वो ज्वाइन किया है, सो वेलकम शाइनी। एंड अभी 18 एंट्रीज हो चुकी है इस लकी ड्रॉ में, ये आपको बता दूं मशीन जनरेटेड लकी ड्रॉ है। सो ऑल द बेस्ट शाइनी, बिकॉज जो भी विनर होगा उसको वर्थ ऑफ 1000 रुपीज़ रीडिंग दी जाएगी, एंजल्स रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। And Shobna Sadaria is saying, I claim this positive energy and reading. Thank you so much, universe. Thank you so much, Dee. You are welcome, Shobna. God bless. Shiny is also saying thank you. You are welcome, Shiny. God bless. So अभी 8 minutes रह गए हैं. अगर somebody wants to use the super chat, then this is the time. और एक बार फिर याद दिला दूं, प्लीज बिकम मेंबर सो दैट यू कैन हैव रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑन कमिंग सैटरडे फॉर मेंबर्स ओनली रिगार्डिंग 2024. ओके, तो जैनिब जबीन, मैडम मेरी गोल्ड रिंग खो गई थी कुछ टाइम से, घर पे है या नहीं, ये पूछ रही हैं। सो देखिए, घर पे है या नहीं, ये थोड़ा सा रीडिंग है, तो अगर घर पे है तो इसके लिए फिर यस है, अदरवाइज आप नो समझ लीजिएगा, कर ये घर पे नहीं है आपकी। और कई सारे जगह शायद आपने ढूंढा भी है जैनिब जबीन, और कई लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली है। सो दिस इज नो कार्ड। एटीन एंट्रीज हो गई हैं इस लकी ड्रॉ में, जो रैंडम ड्रॉ है, ये मशीन जनरेटेड है। सो प्लीज पार्टिसिपेट, लेट्स फाइंड आउट हु इज द लकी वन टुडे। तो जो भी विनर होगा इस रैंडम ड्रॉ का, जो कि मशीन जनरेटेड है, ही विल गेट एंजल्स रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री। ओके, रफिया सना, कार्ड नंबर 1, साजिद से मेरी शादी होगी, बिल्कुल होगी, यस कार्ड है, न्यू बिगनिंग का, अचीवमेंट का कार्ड है, बिल्कुल आप सीरियसली इस पर काम कीजिए रफिया सना, बिल्कुल पॉजिटिव होकर
डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए. यस, सो ऑल द बेस्ट. सुशीला, कार्ड नंबर 2, क्या मुझे कृष्णा सर को अपने साथ कोर्ट लेकर जाना चाहिए? तो देखिए सुशीला जी, पहली बात है ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है. आपको एडवाइस मैं फिर भी करूँगी कि आपको ऑरिकल एडवाइस लेनी चाहिए. जहाँ तक कार्ड नंबर 2 है तो ये यस है, क्योंकि शायद कृष्ण जी जो हैं, जो आपके साथ कोर्ट में जाएंगे, वो आपके जो भी इशू है उसमें रियलिस्टिक और प्रैक्टिकलिटी जोड़ सकते हैं. तो डेफिनेटली ट्राई की ले जा सकती हैं आप. यस है सुशीला जी, लेकिन फॉर मोर इनसाइट प्लीज़ गो फॉर ऑरिकल रीडिंग. Sushila is saying thank you, you are welcome. Shiny, will as become rich and famous. Card number 2. मेहनत मेहनत मेहनत. शाइनी जी, जब तक एक अगर आप रिच एंड फेमस होना चाहती हैं तो दोनों चीज़ें एक्चुअली अलग होती. कई बार लोग फेमस हो जाते हैं ज़्यादा और रिच कम होते हैं. कई बार लोग बहुत रिच हो जाते हैं बट फेमस कम. लेकिन आपके केस में आप दोनों ही चीज़ें चाहती हैं, तो इसके लिए आपको एक नए सिरे से एक प्लानिंग के साथ चीज़ों को हैंडल करना होगा. जो पहले कर चुकी हैं उसके अब आज के बाद या आज के दिन कोई वैल्यू नहीं है. सो एक नया रिफ्रेश रिकिंडल तरीके से नए सोच के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिए. शाइनी जी, मेहनत के बिना आपका ये विश पूरा नहीं होगा, मतलब एस का ये विश पूरा नहीं होगा और सक्सेस भी इमीडिएट नहीं मिलेगी. शाइनी जी, तो पहले पुट इन योर हार्ड वर्क and put in your new ideas, new thought process to become rich and famous. नाउ शशांक, क्या वंदना ने मुझे रिलेशन में सिर्फ यूज किया है? तो ओके शशांक, और आपने कार्ड नहीं चुना है शशांक कोई भी फॉर मी टू रीडिंग. At the same time, Shashank, I would advise you to go for a divine reading. That will really help you. और कार्ड भी कोई चुना नहीं है. और आप शशांक, इनफैक्ट आप अगर मेंबर बन जाते हैं ना, दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू. और उसमें एक तो 2024 की रीडिंग, आप एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, 2024 की रीडिंग आप ले सकते हैं. सो बस ज्वाइन ही करना है चैनल को, दैट्स इट. तो 3 चीज़ें हैं शशांक जी. पहले आप या तो मेंबर बनिए, या आप सुपर चैट यूज़ कीजिए, या आप नंबर चूज तो कर लीजिए कम से कम, क्योंकि आपने कुछ चूज ही नहीं किया है. ओके, तो आपने कार्ड नंबर 2 चूज किया है शशांक जी. ओके, तो मैं पढ़ देती हूँ. तो डेफिनेटली ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा है आपका रिलेशनशिप, और यहाँ पर कोई भी होप नहीं दिख रही है, लॉस ही दिख रहा है. तो डेफिनेटली जो आप सोच रहे हैं वो ही शायद आपके लिए सही है, और आगे जाने वाले में, आगे इस रिलेशन में भी कोई इंडिकेशन पॉजिटिव नहीं आ रहा है. लॉस है पूरा का पूरा इस रिलेशनशिप में. इनफैक्ट आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए शशांक जी, क्योंकि ना केवल इमोशनल लॉस है बल्कि एक्चुअली फिनेंशियल लॉस भी दिख रहा है इसके अंदर.
तो जहाँ तक वंदना का है तो हो सकता है ये जो टाइम है वो शायद अच्छा नहीं हो सकता है यहाँ पर एक छोटा सा ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है वो भी यही फील कर रही हो आपके बारे में शशांक जी। तो इसमें रेमेडी यही है शशांक जी कि जो भी फीलिंग आपकी या वंदना की है एक बार क्लैरिटी ले आइए, दिल खोल के बात हो जाए तो दैट विल मोर क्लियरर एस्पेक्ट फॉर यू। तो नाउ वी हैव चंद्रसेन सिंह, आई जॉइन, उन्होंने एक्सक्लेमेशन से ज्वाइन किया है। 20 एंट्रीज हो गई हैं लकी ड्रॉ के लिए, बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है आज का ये रैंडम ड्रॉ। सो ऑल द बेस्ट, लकी ड्रॉ और हो चुका है आज के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव, 20 एंट्रीज हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी एंट्रीज कीजिए इस लकी ड्रॉ में। Shashank is saying, okay, thank you for guiding. You are most welcome, Shashank. If you want a more deeper reading using divine deck or oracle decks, then please either join membership or use a super chat. And if you are a member, then you can also avail 2024 reading only for members, which is absolutely free. So now my time is up, and just hold on for the quiz, and after that we will be actually declaring the lucky person who will get the oracle, the angels reading, which is worth of 1,000 rupees, absolutely free. So you can also participate in the quiz. So please do not go anywhere. Wait for your lucky draw and participate in the quiz. All the best. Hello friends, welcome back, and this is a quiz program where I'm actually going to post certain questions to you, and you can actually respond by answering those questions. So we will start in a bit. Meanwhile, get ready, buckle up. Whoever wants to participate in the quiz, they can. And this quiz is about the important incident that happened today. So all the incidents which are happening today in our history, we'll be posting that randomly. And also there are 20 entries in the lucky draw, so you can also follow the instructions which are pinned at the top in your message and participate in the lucky draw. All right,
so let's look at the first question. So on December 26th in the year 1864, who invents the coffee percolator or coffee making machine? 1865, December 26th, name of the inventor of coffee percolator or coffee making machine. So friends, actually making coffee requires a lot of a lot of technical knowledge of how to make coffee, because there are so different kinds of coffee. There is instant coffee, there is coffee which is related to things like instant and filter, and some people like cowboy coffee, etc, etc. Different kinds of coffees are there. So making a automatic machine to produce your coffee is really remarkable. So let me show you the question again, and maybe you know the answer. All right, friends. So let me see if there are answers to this question. Okay, so there are several answers. Shiny says Hanson Godrich. Zabeen says James. Vaishali says Hanson Godrich. And Chandrasen says James Nason. So let me see if these answers are correct. Let me show you the answer real quick. And Edified Learning also says Melita Benz. So let me find out if your answers are correct, friends. Oh, we have a technical problem. Let me give you the right answer. Just give me a minute. All right, Zainab, you have been able to crack this one. You are the only one who has given the right answer, which is James. The answer is basically James Mason. And are there any more answers for this question? Let me just check once. All right, so Zainab, you have been able to crack this one for sure. All right, let's move to the next question real quick. In the year 1599, please name the first city of Brazil founded in on December 25th. So friends,
Brazil was founded by the Europeans as we know it. Although the country always existed, it was not called Brazil. And the whole point is that when the Brazil was created by the Portuguese, so the key word is the Portuguese, because in South America and the Latin America, the Brazil is the only country which speaks Portuguese. It's one of the large country in the Americas, which is as big as the United States of America. So as big as USA, Portuguese speaking, because everything else around Brazil speaks Spanish. So only Portuguese settlement, which became a large country in the Americas, which is North and South both included. However, when this was going on, the colonization was going on, which was the first city in the country of Brazil, which was established, and your answers are awaited. So I'm getting a lot of answers here. Edified Learning says Natal. Sayani says Natal. Chandrasen says Natal. Vaishali says Sao Vincent. And Zainab Jabin says Natal. Well, I think it's overwhelming majority for Natal. Natal must be right, but let me confirm if this is right. Well, city of Natal. Definitely, it was city of Natal is the right answer, friends. And so whoever has given the right answer, kudos to you. You have been able to crack this one. And Vaishali, unfortunately, your answer is not right. Edify, Sayani, Chandrasen, Zainab, Jabin, your answers are right. So let's move on to the next question. Who creates the first pendulum clock in the year 1656? Who creates the first pendulum clock? That is the answer question. So if you are preparing for your some sort of examinations, competitive or entrance exam, these questions will definitely help you remember things, because if you can crack this, you have to remember these dates and also the personalities. And pendulum is general knowledge, because we see pendulum all around. Pendulum is a natural occurring phenomena. However, this was identified, converted natural phenomena into mechanical phenomena, and the scientists who did that and used this natural rocking phenomena, the swing phenomena, which exist everywhere in the universe. If you move the pendulum-like structure, it will keep rocking back and forth. To notice this phenomena and then convert this into a useful mechanical device, things like pendulum, because what happens in a pendulum is that the frequency of the swing can be measured and can be noticed that it is swinging because of certain based on certain frequency. So if the frequency can be calculated, obviously we can actually use it for useful purpose. And so who was this scientist? I see a couple of responses. Vaishali says Christian Huygens. Sayani says Christian Huygens. Zainab says Christian. So I give it to you, Christian Huygens. So everybody says Christian Huygens. So it must be right, because everybody is saying the same answer. Let's find out.
Huygen, friends. The right answer is Christian Huygen. And let me now go straight to the next question. In the year 1868, despite bitter opposition, which president grants unconditional pardon to all the persons involved in the Southern Rebellion, which is the American Civil War? Which was the president? So, friends, it's a big thing that you actually perform an act of treason against the country. You actually galvanize an army, then you fight with the Union, which is the government of United States of America back in the days. You fight with that army, you commit an act of treason, but look at the president, the reigning president, who said, look, these are my citizens and I can pardon them. So he actually gave out a presidential order to pardon all the people who participated in the American Civil War. It's a big thing. He got a lot of opposition, very bitter opposition for doing so, for pardoning the criminal, because this is an act of treason. You raise an arm against a country, your own country, and thus creates a civil war. Doing such a thing, giving pardon to your convicts who have committed the biggest crime known in any law book, it is the act of treason. So it's a big thing. President of United States did that. Who was this president? And let me see if there are answers. Many answers. Edify Learning says Johnson. Sayani says Johnson. Chandrasen says Andrew Johnson. Zainab Zabin says Andrew Johnson. Let me see if your answers are correct. Absolutely correct. Andrew Johnson is the right answer. So people who have given the right answer, kudos to you. You guessed it right. Absolutely right. So Edify Learning, Sayani, Chandrasen, Zabin, Zainab Zabin, you have given the right answer. All right, friends. So I think we can end the quiz here. This is a short quiz. And however, there are 20 entries in our lucky draw. And we are all waiting for the lucky draw. And are you feeling lucky? That is the most important question. So, let's draw. Let's conduct a draw while you are online with me. I can do it quickly. And by the way, friend, this is system generated. So we don't have any control. The system chooses the winner. Let's see. I'm going to click the bot and the bot will pick up the winner. So Zainab Jabin has been selected as a winner. So congratulations, Zainab. When we return, a free Angels reading will be provided to you. All the best, Zainab, and great show for winning this.
Hello, congratulations, Zanib, Zabeen, and do you know that I want to share that you are the you also winner of the quiz today. So anyhow, congratulations for both the win. And now I am taking up this angels reading for you, which is worth of 1000 rupees, which is absolutely free for you. So बिल्कुल चुपक कर अपना रीडिंग आप सुनिएगा. Let's find out कि आज आपको angels, what angels are actually asking you to do, what is the guidance angels are giving you. So I'm just taking up 5 cards for you from angels deck, and listen this reading and guidance very carefully. So first of all, okay, so first of all, let's discuss the negativity. The thing is that in case if you are planning something new, so don't do that at the moment, Zane, because the kind of thought process you are utilizing for the new things in your life, that will not work out for you. So you can take some time. So even if you are trying anything in career, there's unlikely that you will get success, and the angels are saying to try something new, it is not a good time. So first of all, whatever you are doing, whatever goals you are pursuing, stick to that only and work on that only. Now how you can get success, it could be your personal, professional goals. For that, what you have to need is clarity in your life, and angels are asking you to communicate clearly what you want. To communicate clearly, that means you have to make sure that whatever you are asking, is it practical enough, or it is something which is doable, और आप वो जो चाहती हैं वो चीज़ करने लायक है. ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज़्यादा ओवरबोर्ड आप जा रही हैं और चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही हैं. जो भी चीज़ चाहती हैं, पहली बात है कि ट्रस्ट रखिए कि आपका जो आपके जो वांट्स हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, वो ट्रू हैं, आप उनको अचीव कर सकती हैं. और जब आपके पास ये सारी चीज़ें और सारा कॉन्फिडेंस रहे, क्लैरिटी रहे, कमिटमेंट का इंडिकेशन है, तो उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, उसको कैसे पुट फॉरवर्ड करना है, ये एक बहुत बड़ा स्किल होता है ज़ैनब, और ये आपको ट्राई करना चाहिए. क्लैरिटी आपके लिए हर चीज़ में ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए डेफिनेटली अच्छा इंडिकेशन है. जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया कि आपको अगर कुछ नया करना चाह रही हैं तो आप वो मत कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपके लिए दे आर थिंकिंग समथिंग मोर बेटर देन आपने कभी सोचा ही नहीं होगा. इज समथिंग मैजिकल जो है एंजल्स आपके लिए सोच रहे हैं. तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है ज़ानिब. आपको एंजल्स आपके इशू पर, आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी लाइफ पे काम कर रहे हैं. सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो कर रही हैं उसमें अपना दिल, दिमाग, कमिटमेंट ये लगाएं, क्योंकि एंजल्स अगर आप कहीं गलत जा रही हैं तो वो मत कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रहे हैं. और आपको ये बिल्कुल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि कुछ नया चेंज आएगा आपकी लाइफ में. बिग हैप्पी चेंज आपके लिए वेट कर रहा है. सो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा समझदारी रखिए, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा. बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है ज़ैनब ज़बीन, कि जो आप कुछ नया कर रही हैं तो अभी ठहर जाइए, अभी थम जाइए, तो कुछ नया मत ट्राई कीजिए. जो भी नया ट्राई कीजिए, वेट कीजिए, जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं उसी हिसाब से आप एक्शन लीजिए. लेकिन जो आप कर रही हैं उन पर अपना कंसंट्रेशन आप रखिए ज़ैनब ज़बीन. उस पर काम कीजिए, शिद्दत से काम कीजिए, चाहे वो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, फिनेंशियल है, डे टू डे लाइफ में भी जो भी काम करें वो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है. तो ये आपने यहाँ पे प्रश्न लिखा है कि अली मेरे साथ कब कमिटमेंट देंगे. तो आपको अभी जो कमिटमेंट है इसके बारे में मत सोचिए, सिर्फ रिलेशन के को किस तरह हैंडल करना है, सिर्फ इसके बारे में ज़ानिब आप सोचिए.
और क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपकी तरफ हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा। अगर कुछ नहीं हो रहा है अली के साथ भी, रिलेशनशिप में भी, तो ये आपके लिए बिग हैप्पी चेंज का पूरा ट्राई कर रहे हैं एंजल्स। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको अगर अली से भी बात करनी है, अपने आप से भी बात करनी है, तो क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। जो बात अपने आप को समझा रही हैं या जो आप अली को बताना चाहती हैं, उनको कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्लियरली चीज़ों को कमिटमेंट करें और जो कर रही हैं उसमें अपना दिलो दिमाग लगा के रखें और ईश्वर पर विश्वास कीजिए। एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। टाइम लग सकता है, दैट इज़ फाइन ज़ैनिब ज़बीन। सो ऑल द बेस्ट। बहुत ही लवली इंडिकेशन है। कुछ नया बिल्कुल अभी तो ट्राई मत कीजिए फॉर सम टाइम, है ना। सो डू दैट, चाहे वो करियर के रिलेटेड हो या एक नया सोच हो, रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़ा ठहर जाइए, उसके बाद ही कुछ नया एक्शन कीजिएगा। सो दिस इज इट, दिस इज योर एंजल्स रीडिंग। ऑल द बेस्ट ज़ैनिब, एंड वंस अगेन congratulations for winning this angels reading. Lovely reading for you and lovely and deep guidance for you, ज़ैनिब ज़बीन. So अब हम कल फिर मिलेंगे with so keep joining at 10 a.m. today. And now I'm taking leave for from today's streaming. आज आपसे विदा लेते हैं, हम कल फिर मिलेंगे। तो ज्वाइन कीजिएगा 10 बजे सुबह, और 10 से लेकर 1 तक बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्रस्तुत की जाएंगी, उनका भरपूर फ़ायदा उठाइए। सो हैव ए नाइस टाइम अहेड। बाय बाय।